पेज नंबर 28 कौन सा है 22 का? नहीं सर, ये पेज नंबर 41 है सर। डेट लिखी हुई है पेज नंबर 40 में, फाइंडिंग है पेज नंबर 41 में, 40 में है सर डेट 30/10/2022, पेज नंबर 40 20/10/22 को इनकी एप्लीकेशन 22(3) की एप्लीकेशन प्रोजेक्ट कर दी है, कहते हुए एडजुडिकेटम लॉट. A similar application has already been decided by order dated 24/9/2022 and suit has been abated in respect of that some of the plaintiff lord. Therefore, this application cannot be allowed. Against that order lord, they have filed an appeal before the appellate court lord to set aside that order and allowed the application under order 22 rule 3 lord. Without challenging the order dated 24/9/2022, my lord, that order cannot be passed, my lord, because it is barred by res judicatum, my lord. इसमें क्या अबेटमेंट होगा इस दावे में? अबेटमेंट होगा सर, बिकॉज द सूट इज फॉर मतलब डिक्लेरेशन टाइटल पार्टीशन ऑफ पार्टीशन में वो 1-2 लोग मर गए, उसके बाद जो व्यक्ति उनके वारिस होंगे वो बाद में नहीं आ सकते. 5 लोग मर गए सर. 5 लोग मरे, 5 लोग मरे, 25 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वेदर देयर इज अबेटमेंट ऑफ सूट और नॉट, वेदर इन द पार्टीशन सूट, सपोज वन ब्रदर डाइज, court abates the suit. Thereafter, brothers, legal representatives come on record and say that we should be implemented. Whether the order cannot be passed. Without setting aside the order of abatement, it cannot be passed. That order of abatement has क्या law लाया इस संबंध में? Partition suit abates. ठीक है, अबेट हो गया, उसके बाद क्या वो आ नहीं सकते रिकॉर्ड पर कोई? क्या उनके राइट्स खत्म हो जाएंगे? Lord, may kindly please to see annexure A9 page number 66. कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने क्या कह दिया? Appellate court has allowed it their application, Lord. पेज नंबर अपीलेट कोर्ट का? Let's start from page number, Lord. T5. And relevant finding is at page number 62. देखो कोर्ट ने लिखा है ये वाली बात. एक तो देखिए, कोर्ट ने जो रेस जुडिकेटा के आधार पर आवेदन खारिज किया वो गलत किया, उसमें रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने आवेदन लगाया था, तब तक आवेदन नहीं आया था वारिसान का, तो कोर्ट को दावा खारिज करना था तो पूरा ही दावा खारिज कर देती. तो अबेट किया उन्होंने, अबेट किया, और कोर्ट ने इस पर भी विचार नहीं किया कि, और कोर्ट का रेस जुडिकेटा का ऑर्डर तो गलत है, उसमें रेस जुडिकेटा क्या, जब वो व्यक्ति आया ही नहीं, उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाए या ना लिया जाए, ये प्रश्न था ही नहीं. प्रश्न तो ये था कि क्या वो उनकी डेथ की वजह से उन्हें आवेदन नहीं लगाया तो क्या अबेट हो जाता है? दूसरा आवेदन आया कि साहब अब हम आ गए, हमें रिकॉर्ड पर ले लीजिए, तो वो रेस जुडिकेटा के आधार पर कोर्ट ने गलत खारिज किया. हालांकि वो कोर्ट इस आधार पर खारिज कर सकती थी कि ये अबेटमेंट सेटिसाइड का आवेदन नहीं लगाया. सर वो नहीं बोल रहे अभी, नहीं लगाया ना, उन्होंने कहा था. नहीं, ये आप भी नहीं बोल रहे अभी, और उस कोर्ट ने भी नहीं बोला, वहां भी नहीं बोला गया ये वाली बात.
अभी आप इतनी देर खड़े हो, आपने भी ये वाला पॉइंट अभी रेज नहीं कर पाए आप। मैंने सर कहा था कि ये कोई बात नहीं, आपने कहा होगा, वो आप विचार करिएगा बाद में कहा या नहीं कहा। अबेटमेंट का आवेदन नहीं लगा, केवल 22(3) का है ना, धारा 5 का भी नहीं है। तो अब कोर्ट ने जो है ये अलाउ कर दिया। तब क्या गलती है बताइए? That is only the my argument that it is barred by adjudicata, my lord. बताइए बताइए ना। My lord, मैं kindly pleased to see annexure A9 पेज नंबर 66 स्टेट C9 नहीं सर, वो जजमेंट ही annexed, जजमेंट ही annexed. का जजमेंट It is my lord MPWN 1995 1 no. पढ़िए क्या लिखा है उसमें? It is written, my lord, abatement is automatic. It does not require order of, my lord, both the respondent died, no last brought on record. Application to set aside abatement file in respect of one appeal is abated, my lord. But appeal is has एजुकेटा की बात कर रहे थे, आपने दूसरी बात पढ़ दी। lordship. यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेटा, आपको बहस करने के लिए हमने कहा कहाँ है जजमेंट, आपने कहा वो है जजमेंट है। तो आपको लग रहा है ये उस पॉइंट पर है? नहीं सर, ये दूसरे पॉइंट पे अबेटमेंट पे। अभी हम एजुकेटा पे थे ना, lordship. तो आपने हमें इतना ज्यादा जोर क्यों दिया कि नहीं पढ़ो साहब उसको, सबसे पहले वही पढ़ो? क्योंकि आप ही ने आर्गुमेंट रेज किया कि रेजुडिकेटा होता है, हमने कहा कहाँ है जजमेंट, आपने कहा वो जजमेंट ही है। तो आप बताइए ना रेजुडिकेटा होता है कि नहीं होता? कहाँ है जजमेंट रेजुडिकेटा होता है? जजमेंट उस पे नहीं है ना? उस पे नहीं है। अच्छा ठीक है, अबेटमेंट पे। अबेटमेंट पे आपकी बात को तो हम जजमेंट उस पर मांगेंगे नहीं, जो आपने पढ़ दिया। अबेटमेंट इज ऑटोमेटिक, ये तो बहुत पुरानी बात है, आज भी वही सेटल्ड पोजीशन है। अब सवाल ये आता है कि क्या बंटवारे के दावे में अबेटमेंट होगा या नहीं होगा? अपीलेट कोर्ट हैज कंसीडर्ड दिस एस्पेक्ट। तो रिमांड ऑर्डर है, ये तो रिमांड किया है ना अपील में उन्होंने रिमांड किया है। रिमांड किया, रिमांड ऑर्डर में क्या गलती है? कोई गलती नहीं है इस ऑर्डर में। वहां जाके अपने सारे आर्गुमेंट रेज करिए उसी कोर्ट में जाके, ट्रायल कोर्ट के सामने, इसमें क्या गलती है? आप वहां जाके बोलिए 22(9) का आवेदन नहीं लगाया या ये नहीं किया वो नहीं किया, जो भी करना है सब आपत्ति दीजिए। आपने आवेदन लगाया ना, उससे कोर्ट ने आपकी बात मान ली, क्या हो गया? अब उसने आवेदन लगाया इधर इस तरह से विलंब क्षमा करो, ये करो वो करो, आवेदन लगा सकता था वो। उसमें कोई कमी थी तो ये थी कि 22(9) का आवेदन नहीं था, वो ना करते हुए कोर्ट ने कर दिया, वो गलत है कोर्ट का ऑर्डर इन माय माइंड। अब ट्रायल कोर्ट के सामने अफसर ही नहीं था कोई कुछ कहने का, उसने तो खारिज ही कर दिया आवेदन। अपीलेट कोर्ट ने देखो यही लिखा है पैरा 24 में, पढ़ो। फलता अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत विधि अपील स्वीकार की जाती है तथा क्षेत्रीय आदेश दिनांक 20/10/2022 को पास किया जाता है तथा प्रकरण को विचार और न्यायालय के समक्ष इस निर्देश के साथ परिवर्तित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित किया जाता है, पढ़ना सीखो लॉर्डशिप। प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विद्यमान न्यायालय व्यवहार हमारे सामने जो भी बोल रहे मान के चलो कि हमें सुनाई पड़ रहा है लॉर्डशिप, और हम चुप नहीं रहेंगे, ये भी पक्की बात है। हम चाहते हैं कि आप जो है पढ़ना भी सीख जाओ लॉर्डशिप। ऐसे नहीं केवल मुकदमे तक कन्फाइन नहीं है, इस मुकदमे का डिस्पोजल ही करना है हमें केवल। हम समझते हैं, चाहते हैं कि प्रत्यावर्तित पढ़ना भी आप सीख जाओ। समस्या है इस समय कि आप लोग सब इंग्लिश पढ़े लिखे हुए लोग हो तो हिंदी में समस्या आती है। ये प्रत्यावर्तित भी एक वर्ड है हिंदी का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए। आदेश 22 नियम 2 के आलोक में अपीलार्थीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13/10/2022 का निराकरण कर यह निर्धारित करें कि क्या पक्षकारों को अभिलेख पर लाने के लिए प्रस्तुत आवेदन में कारित विलंब क्षमा किए जाने योग्य है या नहीं। यही बिल्कुल सही ऑर्डर किया है उन्होंने। इवन आफ्टर होल्डिंग द सूट एज अबेटेड, one person or agreed person can file the application. That has to be decided. That cannot be dismissed on the ground of res judicata.
This is the procedure जो उन्होंने लिखा है. You raise all the objections available before the trial court. अभी भी आपके पास है कि साहब ये 22 का आवेदन नहीं लगाया, जब लिखिए, लिखित में दीजिए. वो चाहेगा तो लगाएगा, नहीं चाहेगा तो लगाएगा. जो भी आपकी आपत्तियां सारी लीजिए. After argument had then the net counsel for the applicant raise for withdrawal. No, I am not withdrawing. But I am dismissing, है ना? है ना? भाई अपनी आपत्तियों को क्यों छोड़ते? अदरवाइज आई से कि सूटी अवेट नहीं होता, मैं क्या दूंगा इसके अंदर? That order has not been challenged. 24(9) for abatement order. It has not been challenged. ये अवेट ही नहीं होता है दावा, गलत है वो ऑर्डर, भले ही नहीं किया हो, भले ही किसी ने चैलेंज, आई विल से दैट देयर इज नो अबेटमेंट. जो आपके हित में है वो यही है कि आप सारी आपत्तियां वहां जाके उठाओ, फिर खारिज करा दो उसका एक बार. अभी भी राइट है आपके पास. वो बोलो, जल्दी बोलो क्या चाहते हो. I am praying for withdrawal. After arguments had then the net counsel for the applicant raised for withdrawal of this civil division in liberty to raise all the grounds of this civil division before the in the civil suit, before the trial court in the pending civil suit. ये कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक है. आप पढ़िएगा जाके कभी 71 शॉर्ट नोट 49 डीवी का जजमेंट पढ़िएगा, उसमें यही लिखा हुआ है कि यदि अबेटमेंट हो जाता है तो क्या करना चाहिए बाद में. हालांकि वो इतना छोटा जजमेंट है कि 3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा. तो आप बोलोगे हमने क्या बता दिया, उसमें समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या निकल रहा है. नंबर 24 Your Lordship, my humble submission is through the present miscellaneous petition. The humble petitioner has challenged the order dismissing the application under Order 6, Rule 17, which is on page number 34, Your Lordship. पास ओवर चल रहे हैं. The application is on page number 34, Your Lordship. With the leave of the Honorable Court, I would like to present the factual metrics of the case. The respondents have filed a case of declaration, specific performance and injunction. Plaintiff, I am the defendant. you are defendant. Defendant. What is the order under challenge? It is an order dismissing my application under Order 6, Rule 17, Your Lordship. In the suit, where is the copy of plaint? The copy of the plaint is, Your Page Lordship, number 14. page number 14, Your Lordship. This is the suit for declaration of title Specific performance and permanent injunction. and injunction, Your Lordship. What is the stage of the suit? Your Lordship, I have, the evidence have not started in the matter, Your Lordship. Plaintiff evidence has not Not started. So you filed 617. I have filed 6. Where is application 617? It is page number 34, Your Lordship. My humble submission is, Lordship, that through the amendment application, I have pleaded the circumstances in which the purported document through which the specific performance suit has been brought by the respondents. Respondent number 1 to 3. I have pleaded that in the year 2001-2002, respondent number 1 was known to me. I had an import and export business for which I required money. Therefore, I requested the respondent number 1 to lend me some money. लेकिन कोर्ट ने क्या क्या कि खारिज किया है देखिए. जी सर. सर नहीं, आपका क्या कहना है कि दिस इज दैट दिस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एविडेंस. My humble submission is, Your Lordship, this is what has been communicated to me, and But you have to read the improved order also. I'm very sorry, Your Lordship. कोई बात नहीं, 40 के बैक साइड में पढ़िए. जी.
हो चुकी है एवं प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य की स्टेज पर है। नहीं, प्रतिवादी साक्ष्य की स्टेज पर है या वादी साक्ष्य पूरी हो गई है केवल, क्या है? वादी साक्ष्य समाप्त हो चुकी है। सर ये पारा नंबर 340 का बैक साइड। सर्वप्रथम तो प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट रूप से दर्शित है कि प्रकरण में वादी साक्ष्य समाप्त हो चुकी है एवं प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य की स्टेज पर है। नहीं, तो अब जो है, जो आप संशोधन पेश करना चाह रहे हो, यू लीड एविडेंस इन दैट, ये तो सारी की सारी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जी सर। ये क्या है? यू कैन लीड एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सबमिशंस। माय ओनली हम्बल सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इज, पढ़िए क्या लिखा है, देखो, ये जबकि वास्तविक स्थिति है, आप वास्तविक स्थिति बता रहे हो। पढ़ो पेज नंबर 34। जबकि वास्तविक स्थिति है कथित संव्यवहार के समय वर्ष 2001-2 में प्रतिवादी क्रमांक 1 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में था। प्रतिवादी क्रमांक 1 में वर्ष 2002 में अपने एक्सपोर्ट के व्यवसाय हेतु बैंकॉक जाने के लिए उपयोग की सख्त आवश्यकता थी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 और वादी अशोक कुमार गोयल के आपस में मधुर संबंध थे और इन्हीं संबंधों के रहते वादी अशोक गोयल ने इस भूमि का सौदा प्रतिवादी क्रमांक 1 को करवाया था। इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अशोक गोयल से अपने व्यवसाय हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से लोन पर पैसा उपलब्ध करवाने को कहा, जिस पर वादी अशोक कुमार गोयल ने उसकी मदद करने को कहते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 को उसकी माता मुहिब अहमद की भूमि को बंधन रखकर लोन लेने की सलाह दी। चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 के अशोक गोयल से अच्छे मधुर संबंध थे और उसे अपने व्यवसाय हेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने से उसने वादी अशोक कुमार गोयल पर भरोसा कर अशोक गोयल के कहने पर अपनी भूमि को अपना जवाब दावे बता दीजिए। जवाब दावे में सब कहा होगा आपने। सर माय हम्बल सबमिशन इज inadvertently this pleading should not be incorporated. जवाब दावे में क्या प्ली है? जवाब दावे में सर जो प्ली है, it is page number 27, your lordship. On page number 27, I have pleaded about, in the first paragraph, I have pleaded that there is a sub judice matter in respect of the same property in question in the High Court, Honorable High Court, and therefore the transaction is struck by Section 54 of the Transfer of Property Act. Secondly, I have pleaded that the possession letter post dated 14/1/2002 has not been executed by me. And thereafter, I have pleaded, which is very important, in para number 3, that I had presented a suit for declaration, which was withdrawn by me because the defendant in that suit was dead when I presented the suit. Therefore, I had withdrawn that suit, and I am contesting this present litigation. So, inadvertently, this whole story was present in the earlier suit which I had filed against the respondents, Your Lordship. But due to the mistake of the counsel, these averments could not be incorporated in the present written statement. Whereas in the suit I filed, everything was there. My humble submission is that these facts which I have pleaded here are not new facts, Your Lordship. These facts are known to the respondents, and this is the whole crux of the transaction between me and the respondents. And if it is not incorporated, Your Lordship, the whole factual matrix won't be able to be presented before the Honorable Trial Court for its adjudication.
पहले भी तो आपने प्ली ली होगी ना, जो नाउ यू वांट टू टेक प्ली ऑफ लोन ट्रांजैक्शन. Yes, Your Lordship. That was the Whether is there any material available on record in the original pleading that you, by denying the agreement, had pleaded that this agreement, this transaction is not in fact a transaction of sale, but it is a transaction of loan. ऐसा कहा होगा ना आपने, कौन से पैरा में कहा? Your Lordship, in my pleadings, I have presented my preliminary objections. Where is that? Page number 27, para number 1, 2 and 3, backside. Page number 27, para number 1, 2 and 3, I have not exactly taken that plea. मैंने सर पेज नंबर 27 पैरा नंबर 1 जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है उसमें जवाब दावे में कहीं कहा होगा ना. जी सर. जी कौन सा? In the entire written statement, have you stated that this is a loan transaction? सर मैंने ये जो पेज नंबर 27 का बैक साइड है सर, वाद पर का चरण क्रमांक उत्तर, इसमें सर कई जगह पे मैंने पैरा नंबर से 4 देख लिया जाए, पेज नंबर 28 पढ़िए. ये वाद पत्र के चरण क्रमांक 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है या अस्वीकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा आवश्यकता होने के आधार पर पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन के कुछ दिनों बाद शेष विक्रय प्रतिफल रुपया 37,500 भी वादी क्रमांक 1 व श्री सुनील श्रीवास्तव से प्राप्त कर ली गई. यह स्वीकार है कि तथा अनुबंधित भूमि का कब्जा भी वादी ने डिनायल किया है. मैंने डिनायल किया सर. हाँ, तो I haven't. Is there any whisper about that that it is a loan transaction? My very humble submission before the पद तो लीजिए, इसमें है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर. तो अब आप पूरा कन्वर्ट करना चाहते हैं सर my very humble submission is क्या? अब क्या, जब ये आप पूरा एग्रीमेंट डिनाई कर रहे हैं तो क्या ये कह नहीं सकते अपने एविडेंस में? कह लीजिए जो कहना है, हो गया. Sir, I cannot deviate from the pleadings which I have made. Which is the pleading you have taken? You are denying the agreement. I'm denying the agreement, Your Lordship. Then say it is a loan transaction. हाँ, हो गया क्या? My आपने पैसा नहीं लिया, जो लिया सब कह तो चुके आप. मैं कह चुका हूँ सर. My only humble submission is and my humble request is that only could appreciate the fact that वादी साक्ष्य के बाद नहीं करेंगे. सर इसमें जो मेरा जो पहला सूट था सर 283 का सर, उसमें मैंने ये सारी चीजें सर ली थी, और ये जो सर तथ्य मैं 617 के माध्यम से न्यायालय के समक्ष लेकर आया हूँ सर, ये सर नए तथ्य नहीं है सर. ये तथ्य सर माननीय अधीनस्थ न्यायालय को जो पूर्ण रूप से जो मेरे और प्रतिवादीगण, मेरे और वादीगण के मध्य जो बात व्याप्त है सर, उसके निराकरण में सर सहायक होंगे. कब्जा आपके पास ना तो कब्जा है ना कुछ, लैंड एक्वायर भी हो गई शायद. नहीं सर, कब्जा मैंने इसमें प्लीड किया. नहीं, लैंड मैंने सेल कर दी है सर. इसको मैंने लैंड सेल कर दी है सर. ये प्रतिवादी रिस्पोंडेंट नंबर 4 को सर, जिसके तो शासन है ना मध्य भारत सड़क निर्माण, ठीक है ना सर. इसमें आई हैव प्लीडेड दैट द लैंड इज इन पोजेशन ऑफ मध्य भारत सड़क निर्माण. आई हैव प्लीडेड ऑल दोस थिंग्स. You contest the suit. My humble submission is that there is an order of the Honorable Supreme Court, because I am not the local counsel here and I was appearing for some other matter and I have been asked to argue this matter, though this is my miscellaneous petition. I don't have the hard copy of the order. But in Southern Kokan Distilleries, Sis Prabhakar Gajanan Nayak, the Honorable Supreme Court has said, even though if an amendment sometimes may be struck by limitation, but if it is necessary that such amendment would help or assist the Honorable Court to decide the controversy, that can be taken up by the court. Plus, the nature of the amendment is not changing the nature of the suit. It is not bringing in any facts which were not in the knowledge of the plaintiffs or respondent number 1 to 3. I am just trying through the amendment to present the whole factual matrix before the Honorable Court, which could not be inadvertently presented due to the mistake of the counsel, Your Lordship. I am not inclined to interfere. My humble submission is, Lordship, if the Honorable Court be pleased to allow me to read the part of the Supreme Court. It is well settled that the court must be extremely liberal in granting the prayer for amendment. If the court is of the view that if such amendment is not allowed,
a party who has paid for such an amendment shall suffer irreparable loss and injury, which is the case here, Your Lordship, with me. Not going to suffer any irreparable loss. You can do anything in your evidence. You have already, I think, you must have cross-examined in that manner. With the leave of the Honorable Court, Your Lordship, the Supreme Court, and I will present my arguments after that. It is also equally well settled that there is no absolute rule that in every case where a relief is barred because of limitation, amendment should not be allowed. It is always open to the court to allow an amendment if it is the view that allowing of an amendment shall really subserve the ultimate cause of justice and avoid further litigation. My only humble submission before the Honorable Court is that through the amendment, through the pleadings which I sought to incorporate in the written statement, Your Lordship, the true picture, the true circumstances in which, as per me, shall be presented in front of the Honorable Trial Court. And that is why it is necessary. And in what circumstances I executed that purported agreement to sell, which is as per them agreement to sell, and according to me, it's a mortgage deal. Thereafter, there was also another transaction which is very important. What is the basis to say this? Your Lordship, Is there any document? Your Lordship, there is, if the Honorable Court be pleased to turn over to page number 34 backside. The last 5 lines, Your Lordship. इस तरह उक्त विक्रय पत्र अप्रत्यक्ष रूप से बंधक पत्र था, ये मैंने कहा है. पश्चात आफ्टर दैट चूंकि वादी लंबी अवधि के लिए विदेश जा रहे थे, इसलिए उसने वादग्रस्त भूमि का नाम अपने नामांतरण पे करवाने हेतु कार्रवाई के लिए वादी अशोक कुमार गोयल के कहने पर उसके नौकर सीताराम के पक्ष में दिनांक इतने को रजिस्टर्ड मुख्तार आम नामांतरण की कार्रवाई हेतु वादी अशोक कुमार गोयल के माध्यम से निष्पादित करवाई थी और इस कार्रवाई हेतु वादग्रस्त भूमि के असल दस्तावेज सीताराम को सौंप दिए थे. नाउ देयर वाज अनदर पावर ऑफ अटॉर्नी आल्सो, योर लॉर्डशिप. It is a very relevant fact to my case which I had given, and thereafter in the year 2007, thereafter I have pleaded that when I came to know that the original documents with the respondent number 1. Where is the agreement? Where is the copy of agreement? My humble submission is, Your Lordship, I haven't filed the copy of the agreement, nor I have filed the Zanama 14/1/2000. Registered, whether agreement is registered? The agreement is registered, Your Lordship. Huh? It is registered. It is registered. Then? With the leave of the Honorable Court, Your Lordship, I pray. Maybe whatever rights you have, you can raise all the pleas before the trial court. You can raise, suppose you don't succeed in the civil suit, you can raise the objections in the appellate. My very humble submission before the Honorable Court is that there are 2 very relevant documents for the adjudication of the present miscellaneous petition also, which are not in my purview because this is an old petition. Suppose you fail the suit, or suit is decreed. You raise all the objections in the appeal. This stage I will not interfere. My only humble submission is that the matter be fixed at some other date fixed. No, I have already heard. Your Lordship, because these 2 documents, I have also challenged the veracity of the possession letter. I have said in the... You can say anything, and even with these pleadings which you have already made in the written statement, that agreement is denied, you have not executed any agreement, you have not handed over possession, you did not execute that document, all the pleas are already available. Only thing you want to say to the court that it is not a transaction of sale, it is a transaction of loan. Main argument is in this manner you have pleaded by way of that application. Yes. Have you raised any thing during the cross examination that it is a transaction of loan? For the same reason, Your Lordship, because the other counsel appeared in this matter in the morning. My humble submission is... Ultimately, if the other counsel does not know how to present a case before the High Court, then the client has to suffer.
my humble submission is the client will suffer irreparably, Your Lordship. The matter be adjourned for a week and I be allowed to file certain additional documents. And my only humble concern and last submission before the Honorable Court is that whatever pleadings I have pleaded through the application, कुछ भी नहीं है sir उसमें. No, this miscellaneous petition with liberty to raise all the grounds at the appropriate stage of the suit as well as in the appeal if occasion है. ऐसा करके आपको सारा राइट्स मिल जाए. अभी आपको एविडेंस देना, एविडेंस दीजिए ना, कौन रोकेगा? सर उसमें मैंने प्लेंट में ये रिटन स्टेटमेंट में कुछ लिखा नहीं है सर. बहुत कुछ लिखा हुआ है. ये तो आपकी काबिलियत है कि आप कहाँ तक उसको ले जा सकते हैं. आप क्यों, आपने आपका रिटर्न स्टेटमेंट कम से 20 पेज का है. बहुत कुछ लिखा हुआ है सर. वो डिनायल किया. आपने तो अनावश्यक 6-17 लगा के कार्ड ओपन कर दिया आपने कि ये कहते हुए कि आपने लिखा नहीं. आपने सब कुछ लिखा है सर. वो प्लेन इतना आपने 6-17 में लिखा है, उसका 90% तो ऑलरेडी जवाब दवा में लिखा हुआ है. विदाउट बीइंग आर्गुमेंटेटिव, मैंने सिर्फ प्लेन जो लोकल काउंसिल है वहां पे उनने सिर्फ प्लेन डिनायल करा है सर. नहीं, उन्होंने बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है, वो अनावश्यक रिपीट कर रहे हैं आप. सब कुछ लिखा हुआ है. तो आपको करना क्या है? सब कुछ मना ही तो करना है. आपको जवाब दावे से वादी की सारी बातों को मना करना है और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होता है. उससे आपने पूछ लिया होगा जो पूछना है. ये केस तो आपने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट कर दिया होगा जी. निश्चित रूप से किया होगा. तो आपको पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया. मेरे को नहीं पता सर. ना, बिकॉज दिस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड जी. तो ये सब ऑलरेडी कह चुके हैं आप जवाब दावे में. अब आपने अपने दावे में, अपनी एविडेंस में जो कह सकते हो कहो. तो वादी साक्ष्य पूरी हो गई, वो आपने बताया नहीं कि वादी साक्ष्य में निश्चित रूप से यदि आपने क्रॉस किया होता तो वहां भी आ जाता कुछ. वो आप जब बोलते जी, जब वो जो सामने वाले के गवाह जब हुए होंगे उससे पूछा होगा, देखिए भैया ये एग्रीमेंट ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ना होकर किरण की सुरक्षा में किया गया दस्तावेज, ऐसा कुछ पूछा होगा. In order to draw the inclination of the Honorable Court in my favor, there is one more ruling and the 3 sentences which I would like to read of the Honorable Supreme Court. This is Mahila Ramkali Devi versus Nandaram and others, 2015-13 SCC 132, wherein it has been held that the party cannot be refused relief merely because of some mistake, negligence, inadvertence, even any fraction of the rules of procedure. ऐसा कुछ है नहीं ना इसमें. सर वो मेरी मिस्टेक, लोकल काउंसिल मिस्टेक को जवाब दावे में सब लिखा हुआ है. सर ये पूरी कहानी कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं करी है सर. रोज मन में नहीं आती है सर. न आप एक रात सो जाते हो, आपके मन में दूसरी कहानी आ जाती है. तो कहानियों को थोड़ी जो है आप अपना केस. My only humble submission is that this amendment, seen in the light of the earlier suit which I had filed and withdrawn, in which the respondent number 1 to 3 were present and they were known to these facts. It is only my humble submission. No, I am not inclined still. What do you want? Your Lordship, the Honorable Court is not satisfied, then I'll like to withdraw this petition. After arguments are done, the great counsel for the petitioners defendants placed for withdrawal of this miscellaneous petition with liberty to raise all the grounds of this miscellaneous petition at the appropriate stage of the suit or in appeal or in regular trial court regular appeal if occasion arises. Highly obliged, Your Lordship. Bill number 25. Wait, please, sir. All the matters are filed by Apalapama in the morning itself, but in compliance with the direction of matters, I'm present. आप बताओ कि हमें ऐसा लग रहा है कि बढ़ने लाके एडजस्ट करने लाके हम करते हैं. अब उन्हें केस तो बताओ. As this is a miscellaneous petition under Article 227 of the Constitution of India, Malice, whereby an order of the trial court has been challenged Which order? as the order dated 24/9/2018, whereby the Learned Trial Court as well as arbitrarily rejected the application under Order 8 Rule 1A filed by the petitioner You are defendant. defendant. I am the defendant, Malice.
पढ़िए इस ऑर्डर को पढ़िए। Right. If Alice, please have page. Yes, there's a slight pagination error in the नो प्रॉब्लम, आपने बताया ना 24/18 का ऑर्डर। 24 दिस इज ऑन पेज नंबर 17। That's 17. If Alice, please have the next page. Right. आप ये ऊपर से ही पढ़ो, Right. समझ में आ जाएगा क्या कहना है आपका। Right. वादी द्वारा श्री रत्नेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा श्री अतुल धारीवाल अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी क्रमांक 5 पूर्व से एक पक्षीय। प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। आज प्रतिवादी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार पथिक का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया। साथ ही एक आवेदन पत्र अंतर्गत बोलो नीचे पुनश्चा पे आ जाओ। पुनश्च पक्षकार पूर्वक इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतरादेश 1/8 नियम 1A3 संबंधित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है। प्रतिवादी ने आवेदन पत्र पेश करते हुए व्यक्त किया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने साक्ष्य की असलियत विशेषज्ञ साक्षी रविंद्र कुमार पथिक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उनके द्वारा असलियत की जांच की गई है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट न्यायिक निराकरण के लिए महत्वपूर्ण है, अतः रिपोर्ट अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की है। वादी अधिवक्ता ने आपत्ति व्यक्त की कि जब उक्त संबंध में पूर्व में ही आवेदन निराकृत हो चुके हैं, दस्तावेज इस स्टेज पर स्वीकार योग्य नहीं है, आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उच्च न्यायालय के द्वारा परिवीक्षण याचिका के तहत वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 2 अवसर 2,000 रुपए के हर्जे पर दिए गए थे। वादी ने उक्त आदेश के पालन में साक्ष्य प्रस्तुत न करते हुए हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच कराए जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था। दिस वाज सेपरेट एप्लीकेशन किया था, जिसका निराकरण प्रकरण मुझे अंतरांतर प्राप्त होने के पश्चात किया गया था तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ के संबंध में प्रतिवादीगण का आवेदन निरस्त किया गया था। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य की स्टेज पर इस न्यायालय पर अविश्वास व्यक्त करते हुए माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय प्रकरण अंतरण हेतु आवेदन पेश किया। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा धारा 14 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन निरस्त करते हुए यह मामला विधि अनुसार तत्परता से निराकृत करने हेतु भेजा। प्रकरण के अवलोकन से दर्शक हुई प्रतिवादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में राशि जमा की गई यह भी अभिलेख से दर्शित नहीं है। संबंध में पूछे जाने पर व्यक्त किया कि 2,000 रुपए की राशि जमा कराई गई थी, किंतु प्रतिवादीगण ने इस संबंध में कोई रसीद अभी तक प्रस्तुत नहीं की है, न ही आदेश पत्रिका पर इसका उल्लेख है। हस्तलिपि विशेषज्ञ ने से स्वयं जांच कराकर दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तथा अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की है, जबकि इस संबंध में न्यायालय ने पूर्व में ही आदेश पारित कर व्यक्त किया था कि हस्ताक्षर की तुलना न्यायालय भी कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था, इसलिए आवेदन स्टेज पर पोषणीय नहीं है। तदनुसार प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1A3 संबंधित धारा 151 निरस्त किया जाता है। My most humble submission is merits. This matter was at the stage of defendant's evidence. On behalf of the defendant's merits, आप इससे चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो इस ऑर्डर में? yes, I'll just brief you, Your Lordship. ये मेरे को ये तो बताइए, ब्रीफ बात ना करना, Yes. क्या दस्तावेज पेश करना चाहते That is the document which was sought to be produced before the learned trial court. डॉक्यूमेंट? Now, this is a report of the handwriting expert with respect to certain signatures. हाँ, तो वो पेश कर दिया आपने? मैंने पेश करने के लिए ही आवेदन प्रस्तुत किया था। Now, what learned trial court has done, Your Malice, is that the witness has been examined, but the report which has been authored by the witness has not been taken on record, Malice. Whether any application was dismissed previously for placing additional documents, it was not dismissed, Malice. so whether any application for examination of handwriting expert was dismissed previously? Malice, for an application was dismissed, Malice, it was for the inquiry or an expert opinion, following expert opinion. Generally, application is filed under section 45 of the Evidence Act. Malice. Whether any application was previously filed by any of the parties? Malice, that I do not have specific instructions on that one. Malice. An application was filed by the defendant for getting the signature of the plaintiff number 3 examined on the power of attorney. That application was dismissed. Because in the first how I gave a judgment by this HON'BLE court. No, which was when it was dismissed? So that was dismissed in 2018. So MP was filed by them. नहीं, यहाँ कुछ दस्तावेज लगा है क्या?
So इसमें नहीं है, इसमें तो उसको कर ही नहीं किया हमने। देखिए ये आपकी बात सही है कि जब कोर्ट ने उसका बयान ले लिया, उसी व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं ली, Merits. है ना, ये कहना है आपका। Merits. लेकिन पहले आप ही का आवेदन खारिज हो गया है 45 का। Merits. I do not have specific instructions on that point. So ये 28/9/2018 को इनकी MP खारिज हुई। So ये MP फाइल की 9/10/2018 को, इसमें हमने किस वो लेकर आए जो एक्नॉलेजमेंट है that the plaintiffs cancel the power of attorney given to the defendant number 1, उसका जो एक्नॉलेजमेंट है ये उसके लिए हमें वो लेकर आ गए। सर डिफेंस एविडेंस में हमने कुछ दिया ही नहीं, सीधा ऑर्डर 1A की एप्लीकेशन लेके आ गए, हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को खड़ा कर दिया। सर दैट एप्लीकेशन डिसमिस is that this MP has been filed by them. Merits. The conduct of your application, which my learned friend is discussing, it does not. First of all, it does not pertain to the signature in question here. ये जो आपने 45 की आवेदन पहले लगाया था, सर ये लगाया था सर के लिए कि उनके बस का नहीं। संजय कुमार लालवानी आप ही हैं, आपका कोर्ट का ऑर्डर है 28/9/18 का। ये 28/9/18 के ऑर्डर में आप ही ने जो है ये लगाया था MP, और इससे जो है इससे आपका आवेदन खारिज हुआ था। वो MP जो है सर 3 साल बाद 2015 में क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुआ था प्लेंटिफ नंबर 3 का, he denied his signature. को बताने दो भाई। There's a copy of Your previous application for the same purpose was dismissed, na? That is for different signature. Which different signature? Whereas that signature, as my learned friend has pointed out, was on the cancellation of power of attorney. This signature is Same person, na? of the same person. Here, Alice, the question is, the addressee of that notice of cancellation was Mr. Subhash Nalwani, and on the acknowledgement of the post, the postal receipt, which is at page number, If only one person's handwriting or signature were to be examined by the handwriting expert, and for that purpose we filed section 45. Merits, here for the signature which I am alleging here, Merits, That person is the same, na? Merits, we are alleging that signature. Again and again, same person's signature will be examined by different handwriting experts. No, not at all, Merits. Not at all. That application was for examination About this order. And what was the prayer in this MP? Yes, I do not have specific instructions on that point, but my most respectful submission here is this report of handwriting expert which has been questioned. The case. Now, the case is that the postal acknowledgement of notice of Case means what is the suit? now the suit was for declaration and possession. Suit was filed for declaration, for declaring two sale deeds as null and void, and for reappraisal. Who executed sale deed, in whose favor it was executed? So the sale deed was, the power of attorney was executed in favor of the defendant number 1. Who executed power of attorney? So the plaintiffs. Plaintiffs execute all the three plaintiffs. उनने वो attorney cancel कर दी थी, Power of attorney plaintiffs. कैंसिल कर दी थी। उस कैंसिलेशन के बाद इनने है ना वो सेल डीड एग्जीक्यूट की थी अच्छा डिफेंडर नंबर 1 में। अच्छा when power of attorney was executed? That was Power of attorney is dated. so that was somewhere in 1982. अब समदेयर से बात करेंगे आप कैसे काम चलेगा? So, if I may, Case. चलो आप लोग और कल पढ़ के आओ। if this matter may be kept after 2 weeks, ऐसे नहीं चलेगा, अनलिमिटेड नहीं चलेगा। लिमिटेड टॉक टाइम है और काफी जो है हो चुका है। I've just received the documents last night. पता है कल करेंगे परसों करेंगे, ये नहीं चलेगा। थर्सडे का बीच चलेगा, इन्होंने एकदम खुद ही बढ़ा दिया। थर्सडे को बता दीजिए काय के लिए इतना मुकदमे में जो है जो आपका मिल सकता है सो मिलेगा। इन्होंने आपको अभी ऑर्डर बताया वो भी पढ़ लीजिए। I've just gone. My most पढ़ लीजिए ना, एक MP में क्या जो है 25 साल लगाओगे? not at all. सारा भी तो जो है ही कितने साल चाहते I understand. चाहते हैं MP के डिसीजन के लिए? तो I am ready. तो आपकी ये दशा हो रही है। I am ready to
have this matter adjudicated matter. You should be ready and you should argue. You have already argued well. थोड़ा सा और देख लीजिएगा. Highly objected. Serial number 32. My lord's position. Lord, this was the contempt matter that your lordships heard to some extent in the last week. But my lord wanted to see, Lord, what was the scope of jurisdiction, because I had made the submission, my lord, that बताइए कौन सा judgment? you have two judgments I will be placing lines upon. Things which were not done in the writ petition can be done in the contempt. My lord, per se, that is not my submission But as it's such, my lord. for judicial review in the contempt. Yes, but there are two aspects that my lord may kindly consider, my lords. One is whether the order read as it is complied with or not, my lord. Now, यही देखना है. एक तो एस्पेक्ट ये है सर. अब इस पर सबमिशन ये है कि देयर वाज अ रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट माय हाउस वाज बीइंग लेफ्ट आउट. आई अप्रोच्ड माय लॉर्ड्स डायरेक्टेड देम टू टेक नोट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर and also the report which was subsequently prepared and pass an order. Then I filed a review. कि कलेक्टर के ऑर्डर नहीं में जाइए इसमें ज्यादा. सर मैंने निवेदन किया था कि कलेक्टर का ऑर्डर न देखें, क्योंकि कलेक्टर का ऑर्डर जो है दैट इज ऑलरेडी ऑन अ फैक्चुअल फुटिंग. Now once your lordships have directed him, then he has passed an order made and review saying ठीक है, we will not see the collector's order, but we will pass a fresh order. Now he passing a fresh order in one paragraph he says that my jurisdiction is limited. I will not go into the factual aspects जो मैंने पहले तय कर दिया वही ठीक. So, my lord, to that extent, blatantly nobody is committing contempt. Even if we read the order as it is, because my lord's order is to decide on merits of the matter. And when he says, I will not decide on the merits of the matter, to that extent, my lord, he commits a blatant contempt. Second is to the extent where he refers to, my lord, not directly, but on the same material on which the collector had earlier decided, he could not have referred to that material. After the review order specifically said that he will not go into the order of the collector passed earlier and decide on the basis of the report which is received from the office. So, Lord, I have two submissions, Lord. एक बार सर उस ऑर्डर को देख लें जो आपने पास किया और उस ऑर्डर को कैसे वो मीट आउट करा. Page 13. My lords have the record of the contempt. But the initial order is at page 8. जी. My lords have page 8. My lords have recorded all the considerations. I will not go so much into the factual with the submissions. Considering the aforesaid, page 9. Considering the aforesaid, the petition is disposed of directing the collector CB to pass an appropriate order taking note of the report of the committee constituted by the order dated 6/4/2023 and decide the claim of the petitioner in respect of खर्चा number 25 without being influenced by the order dated 29/8/2022. ये कलेक्टर का ऑर्डर था. However, it is made clear that if the order dated 29/8/2022 of the collector is relevant and is required to take some help of the said order, decision may be assigned by the collector and the order passed accordingly. So, my lords directed them to decide on merits of the matter. Let the aforesaid exercise be completed by the collector CB within a period of 60 days from the date of certified copy of the order passed today. Now, my lords, reviewed this order by C2, page 11. And after taking note of various aspects, page 13, paragraph 3. Considering the submissions made by the counsel for the petitioner, and after perusal of the record, I am modifying the order dated 17/7/2023, passed in WP number 10192 of 2023 in the following manner. Considering the aforesaid, this petition is disposed of directing the collector to pass an appropriate order, taking note of the report of the committee constituted by the order dated 6/4/2023 and decide the claim of the petitioner in respect of khatra number 25 without being influenced by the order dated 29/8/2022 and pass a fresh order if so required.
provide an opportunity of hearing to the petitioner and other claimants whose lands have been situated over Khasra number 20, Khata number 20. Now, the compliance report, my lord, may just see, lord, what he says with regard to this. इस ऑर्डर कोड पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? जी. आप पास है फ्रेश ऑर्डर, Pass a fresh order. Being the aforesaid, the decision is disposed of directing collector CB to pass an appropriate order taking note of the report of the committee constituted wide order dated 6/23 and decide the claim beside petitioner in respect of खाता number 25 without being influenced by the order dated not by and pass a fresh order and so required provide an opportunity. कर दिया, पास कर दिया. सर वो जो पास किया है ऑर्डर, उसको एक बार देखें. सर उसको कितना देख सकते हैं, उसपे मुझे कोई जजमेंट बताइए. There is one judgment of Supreme Court I have seen that nothing can be done after. Series of judgments, they exactly as your lordship said. जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का. एक मिनट, जो आप कह रहे हैं सर वैसा ही है, उसका कुछ एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ने कार्व आउट किया है सर. एक आध कोई बढ़िया सा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से करा लाइए कि डब्ल्यूपी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम कंटेम्प्ट में होगा. एक बार कंटेम्प्ट ही सुनेंगे दिन भर बैठ के. एक बार देखिए सर, 96 सुप्रीम कोर्ट. This paper construction law, this is one of the leading judgments on this point. बताइए इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था? In this case, हाई कोर्ट ने क्या कहा था बताइए. मैं पढ़ देता हूँ सर, फैक्चुअल पार्ट पढ़ देता हूँ. और ये तो बहुत वाइड है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट बिल भी लगा दिया. अरे इसमें कुछ नहीं होगा. आई विल नॉट डू एनीथिंग. ये गो इन दी, इसमें कुछ भी नहीं है, सब सारी की सारी कॉपी पेस्ट कर दिया है इसमें. इसमें वो है ही नहीं. पेपर कंस्ट्रक्शन तो सर लीडिंग. अरे वो कंस्ट्रक्शन के मैटर ही वहां तक जाते हैं, साधारण आदमी के नहीं जा पाते. इसकी पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी पर कंस्ट्रक्शन. यहाँ तो आप छोटी सी बस पैरा 17 से देख लीजिए सर एक बार. मेरा आग्रह है पैरा 17 पिटीशन लगा दीजिए, आपका बढ़िया उसमें काम हो जाएगा. बताइए. पैरा 17 से देख लीजिए सर. The principle that a contemner ought not to be permitted to enjoy or keep the fruits of the contempt is well settled. In Muhammad Idris versus Rustam Jahangir Babuji, this court has clearly held that undergoing punishment for contempt does not mean that this court is not entitled to the appropriate directions for remedying and rectifying the things done in violation of the orders. The petitioners therein have given an undertaking to the Bombay High Court. They acted in breach of it. And the judge held them guilty of contempt and imposed a sentence of 1 month imprisonment. In addition thereto, the learned single judge made appropriate directions to remedy the breach of the undertaking. It was contended before this. बिल्कुल सही बात है. ये मैटर में इसमें ऑर्डर क्या था? क्या मैं वही कह रहा हूँ सर. एक बार ऑर्डर जो पास किया वो देखें सर, जिसको ये कह रहे हैं कि ये कंप्लायंस है. नहीं, The basic order was with regard to furnishing of the undertaking was furnished, which was taken as an order of the undertaking. My lord, the undertaking is noted, lord. I'll just point out what the undertaking is. इसमें तो अंडरटेकिंग नहीं दी. सर वो स्पेसिफिकली अंडरटेकिंग का तो 100% ब्रीच होता है. If you have given someone, suppose you have given undertaking that I will vacate the premises, I will do not that amount 100% contempt है. इसमें तो रोक ही नहीं है. The argument was, lord, that in contempt only he could be punished when no further directions can be issued. Sir, if you say that the representation be decided, बड़ा मुश्किल है उसमें. When other party did not say anything, other party has not said that, उसने decide कर दिया wrong or right matter ends. This should be the I think spirit of that order. Otherwise डिसाइड करते ना पैरा 4 में क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लें. जो ऑर्डर कंप्लायंस का फाइल किया है, दैट शोज द अप्रोच ऑफ द ऑफिसर आल्सो. एक बार पैरा 4 देखें. पैरा 4 है. पैरा 4 पेज 11 कंप्लायंस रिपोर्ट नोट्स. ऑफिसर है साहब, कभी जो है कर देते हैं आपके पक्ष में, कभी नहीं करते. टोटल अप्रोच ही ऐसी है कि हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे हाई कोर्ट कुछ भी बोलते. इसलिए तो हाई कोर्ट से क्लियर बुलवाओ. कौन सा है? तो सर पेज 11 बुलवाओ, नहीं तो बड़ा दिक्कत जाएगी. रिप्रेजेंटेशन डिसाइड का तो फिर यही समस्या आएगी. एक बार पेज 11 देखिए. कितना खर्चा करते हो आप, कितनी बड़ी बड़ी पिटीशन लगाते हो और उसमें कुछ नतीजा नहीं निकलता. रेट में लगाना चाहिए. सर वो रीड से सब होके रीड का ही रिकॉर्ड आपके सामने फिर से लगा दिया सर, केवल कन्वीनियंस के लिए कि आप देख सकें. इतनी दुर्भाग्य है जो है उस क्लाइंट का कि ये जो है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा.
सर ये जो अलग से कंप्लायंस फाइल की है 2 4 8 10 पेज की, ये सुनिए, उसमें क्या है कंप्लायंस जी, पेज नंबर मतलब यही ना 5/1/24 का। जी 5/1/24 का, इसका पेज 11 देखिए, रनिंग पेज 11, उसका पैरा 4, भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 33 में विहित प्रावधानों के तहत कलेक्टर एवं जिला बोर्ड अधिकारी पारित एवं घोषित अवार्ड में केवल लिपिकीय एवं गणितीय संबंधित भूल अथवा उसमें होने वाली गलतियों को सुधार करने की अधिकारिता है। भूअर्जन एवं पुनर्वास अधिनियम में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 64 में प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति जिसे निर्णय स्वीकार नहीं किया है, उसे अभिनिर्णय से असंतुष्ट है, वह प्राधिकरण के समक्ष अवधारण के लिए अपना पक्ष रख सकता है। सो ही रिफ्यूजेस टू एंटरटेन माय डिस्प्यूट ऑन मेरिट इटसेल्फ। सर देखिए, मैंने तो जो है बताऊं आपको, मेरे समझ में तो जो उन्होंने कर दिया ये ठीक है। You can argue, you can take, नहीं, मैं आपका समय, लेकिन क्या है कि ये बड़ा मतलब ये स्थिति खराब है। रिप्रेजेंटेशन देन कंटेंट, और कंटेंट में जो है उस क्लाइंट का बेचारे का कितना टाइम वेस्ट होता है। कोर्ट तो खैर ठीक है, कोर्ट का तो जो होता है सो होता है, कुछ उसको मिलता ही नहीं है। नहीं, जो रिकॉर्ड मैंने पेश किया है रिट का रिकॉर्ड है, ये दर्शाने के लिए कि अगर आपने एक रिप्रेजेंटेशन, एक कंटेंट, फिर रिप्रेजेंटेशन, फिर डब्ल्यूपी, यही करिए और कोर्ट में निवेदन करिए कि साहब मेरा ऑर्डर साफ साफ कर दें। या आप सिविल रिवीजन हमें 2 घंटा लगता है डिसाइड करने, रिप्रेजेंटेशन आप 1 सेकंड में डिसाइड करा लाते हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आया, सिविल लीगल में कितनी मेहनत करते हैं, दुबे साहब देखो बैठे हैं। एक सिविल लीगल में 6 घंटे बहस हो रही है, और डब्ल्यूपी में 1 सेकंड में हो जाता काम। कितना अच्छा काम है ये डब्ल्यूपी का। तभी डब्ल्यूपी के वकीलों का जो है स्कोप ज्यादा रहता है, हर आदमी डब्ल्यूपी लगाता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर हो जाता है, फिर उसमें मिलता जुलता नहीं है, जिसको मिल जाता है वो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा आग्रह है कि सिंपल रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर नहीं थे सर, बहुत कुछ कंसीडर करने के लिए बाद आपने ये कहा जो दे सकते हो वो सब दे दो रिपिटिशन में, रोक कहाँ है? रिपिटिशन में भी दिया जा सकता है, लेकिन उसको उन पर छोड़ दोगे, वो लोग तो जो है मतलब आपके दुश्मन है, जो उन्हीं के पाले में बॉल डाल दी कि वो पैसे देंगे आपको, वही आपके दुश्मन कैसे डिसाइड कर देंगे? सब छोटा सा डिस्प्यूट था, 1,10,00,000 रुपए डिटरमिन किया, अवार्ड लिख के रख दिया, टाइम बार हो गया, नहीं हो पाया, उसके बाद नई कार्रवाई शुरू की, 5 लाख अवार्ड कर दिया। नहीं कर पाए टाइम भी। सुनाओ, और माइलॉर्ड ने कहा कि उसके ठीक है, उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके कमेटी की रिपोर्ट आई, कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, अब इस रिपोर्ट के हिसाब से डिसाइड कर दो, तो रिपोर्ट को दरकिनार करके फैसला कर दिया। तो इट इज मैटर ऑफ डब्ल्यूपी अगेन सर, ये अभी भी डब्ल्यूपी का ही, डब्ल्यूपी में आप ये सारी बातें बताइए और कोर्ट विल पास ऑर्डर इन योर फेवर। अब इनको पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं? जो यहाँ पे खड़े तक नहीं, उनको मालूम है कुछ नहीं होगा। I will say I am of the considered opinion that no contempt is matter. I will say, or you can challenge this order. But I will have to challenge that order. ना अच्छे से चैलेंज करिए। मैं तो यदि आपका निकलता है आई एम विद यू, लेकिन ऑर्डर तो हो। After argument at length, the learned counsel for the petitioner in the light of decision, in the light of order dated March 1, 2024 within bracket annexure R1 passed by the collector district CB, prays for withdrawal of this content petition
with liberty to file writ petition seeking appropriate relief. There being क्योंकि आप लोग कभी मंथन करिए, जजमेंट मैंने कल ही सर्च किया, वो सारे इस तरह के ऑर्डर्स में आपके खिलाफ लगाया जा सकता है। है ना, अगर आप अनुमति देंगे तो एक 2024 का अभी आया है सर ये देखिएगा 2009 जी वॉल्यूम 3 SCC 186, 2009 वॉल्यूम 3 SCC 186, इसको थोड़ा सा देखिएगा, जी ये इसी पॉइंट पर है, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही। इसके बाद क्या किया जा सकता है? ठीक है सर, I'm like this. डायरेक्शन मैटर भी है। Direction meter, serial number 126. There's an application under order 22 rule 4 and the सीरियल नंबर कौन सा है? 126. 26, Yes, ma'am. 120, 126 से शुरू होता है। बोलिए क्या करना है? कुछ एप्लीकेशन है 22/4 की और 22/9 की सर। मैं 22/4 22 भी डिसाइड नहीं कर रहा, कुछ राजीनामे की संभावना है? आई विल नॉट डिसाइड टुडे। नोटिस का देखिए टाइप है 22/4 देखो, स्प्रेड लिस्ट इन दी नेक्स्ट वीक। डायरेक्शन मैटर में तो यही है कि क्या मैटर हो सकता है इसमें, क्या का डायरेक्शन मैटर है? मैं तो आपको जो है कोई राजीनामे की संभावना दे रहा हो तो बताइए भैया, मेरा पूरा समय इसी में चला जाएगा। 22/3 22/4 में 127. वर्षिप सब्स्टिट्यूशन की आई थी, उसमें सब्स्टिट्यूशन की आई थी, उसमें रिस्पोंडेंट ने जो as spread list after 2 weeks. 128. मेरा 6 1 week टाइम अकेडमिक्स के सर मिस्टर से 22 से आपने लगाया है, जी तो आप कितना समय चाहते हैं? किसकी डेथ हो गई है? Responding to respondent number 1. Counsel for the applicant phrase warrant is granted 4 weeks time 4 weeks. to file requisite application for substitution of legal representatives of account number 1, comma failing with this appeal shall stand dismissed without further reference to the court. 4 हफ्ते में लगा दीजिएगा आप, इसको लगाना है। Yes, my lord. Okay. पहले भी लगा सकते हैं आप। जी Serial number 129. Not so on the last date of hearing, the lordship issued SPC through a respondent, your lordship. The matters to be heard finally, your lordship. ठीक है, as per list for filing ऐसा करना, मैंने appearing on behalf of the respondent despite issuance of SPC. क्या लैंडलॉर्ड अपील है? Landlord appeal, your lordship. लिख दिया as prayed by learned counsel for the applicant list for final hearing in the next week, Not in the month of April, your the lordship. month of April. Lordship. Oblige, your lordship. 130. Then for the parties adjourned. 131. Your lordship, I am on the behalf of the appellants क्या and compliance करना है आपको? जी sir, we will comply the order within a week. कितना एक हफ्ते का समय चाहिए? जी within a week. Learned counsel for the applicant praise warrant is granted 15 days time to comply the order dated 8/1/2024. Yes, yes, Comma, failing this appeal shall stand dismissed without further reference to the court. 15 दिन में कर दीजिए हैं। Oblige, my lord. Shashank Mishra. 132.
क्या एसपीसी गई थी क्या? Despite issuance of none for the parties, वाला order really protest करके था with corporate life. 133. Rajneesh Gupta. Same smell. 134. Shri Rakesh Jain. Shri Raghunath Jaggar. Allowed 6 time. Senior is not present in the court. Spread list for finding the finding list. One 135. क्या मैटर है ये? Sir, in this matter, we are not in contact with the parties respondent. फाइल नहीं है क्या? Unless I have a file, but we are not. फाइल है तो मैंने ये क्यों बता रहे हो? The civil suit was filed by the appellant for the eviction of the respondent. There is a dispute between the Mallards. You are tenant. No, Mallards. I have the license, You are Mallards. landlord. The dispute is between Lord, Mallards. I am the son of the appellant. Dispute is between father and son. प्लांट के सन हो तो इधर खड़े हो ना. I am the defendant. Dispute is between son and father, Mallards. Appellant was father and defendant was son. अभी फादर हैं? I didn't. फादर हैं क्या? ये नहीं पता सर. क्यों? Instructions नहीं मालूम. अपील में जो है 75 साल उम्र लगी है और 20 साल बाद आई है, 22 साल बाद. Mallards, we try to contact, but आपके पिताजी का नहीं पता? no, Mallards. खारिज कर देते हैं. आपको भी नहीं इंस्ट्रक्शंस हैं? Mallards, contact भी नहीं. चलो नन फॉर दी पार्टीज करके 5 ईयर कोर्स सेवन. 136. Shri P.S. जो फाइल Worker. One 137. Shri Rajneesh Jain. हाँ मैडम, इसमें अगर फाइल पूरी कंप्लीट नहीं है, कितनी है? थोड़ी सी फाइल. कितनी आया था ये मैटर मैडम? क्या है ये? वो है क्या एक्सपीडिशन वाला है क्या? एक्विजिशन का नहीं है वो, लैंड एक्विजिशन का है, लेकिन वो पहले पार्टी ने जो फिर बाद में बनाया पार्टी ने.
मेरे पेपर में झोपड़ी बना ली थी वो, उसके बाद वो दूसरा रहने लगा था मिठाई ला, जिसने बोला कि हम आ गए 16 Serial number 130. Yes, Rao. One hundred and 39. Sri Arkan Anulia. एसपीसी का ऑर्डर करते हैं, कोई जांच भी तो होगी ना, गाड़ी होती है, गाड़ी भी होती है ना, सही है। One hundred and 40. बोलिए। Sri Adil Usmani. Manoj, this suit was for declaration and permanent injunction P31. There was a dispute between two adjacent houses, construction related to that. It has to be heard finally, Manoj. आप अपीलांट हैं क्या? No, Manoj, I am for responding. Who is appearing for appellants? क्या डिक्री? Manoj, इसमें दो adjacent houses थे जिसमें construction. ट्रायल कोर्ट आपके पक्ष में होगी ना डिक्री? Yes, Manoj. Is the decree? Manoj, we have constructed some areas उससे related dispute था. उसमें None for the appellant, इनको एसपीसी जारी कर दो appellant को और respondent की तरफ से नीचे एसपीसी जारी करो। पंद्रह अप्रैल की थी। One hundred and 40. Sri Rao Pathak. but I am for the respondent. Lordship. एसपीसी गई थी पहले। Lordship, first time लगा Lordship ये direction. मैं एसपीसी कर दो appellant पे। वही रहेगी ना। 142. Sri R.S. Tiwari. एसपीसी कर दो दोनों पार्टी से। 143. States. You may admitted second appeal of the funding fee. Yes, trade list for finalizing list. 144. Sri R.M. Sharma. दोनों पार्टी का एसपीसी। 145.
ये भी admitted first appeal है. List for filing the final. नहीं तो इसमें तो लिखा है फॉर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन रिगार्डिंग डेथ ऑफ रेस्पॉन्ड नंबर 3. कौन सा नंबर था ये? हाँ, रेस्पॉन्ड नंबर 3 की डेथ हो गई, आपने देखा नहीं है क्या? नहीं, इसमें मेरी फाइल में नहीं था सबमिट को. तो लिस्ट में लिस्ट से बोला करो, लिस्ट में ये लगाता है ऑफिस, इसलिए एक्चुअली सर ये रेस्पोंडेंट नंबर 3 के जो एलआर हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर मैं और देख करके देख लेना. तो ऐसा गलती से भी हो सकता है. वो भी है. मैसेज फॉर इंफॉर्मेशन. जी. Sir, I admitted first appeal to be heard finally. As spread, what is it? As spread list for filing the filing list. My lord. 147. देख लेंगे पहले एसपीसी भी है निकली 147 एसपीसी का 148. देखो फिर एसपीसी हो जाएगा. आखिरी ऑर्डर दे दो. नहीं हुई ले दो. एसपीसी टू वोट. My lord, it is a admitted appeal. It to be heard finally. रेड लिस्ट को फाइनली आइए ध्यान प्रकाश पेश करना. Maharaj, we have also referred a contempt petition. एडमिशन एंड फॉर स्टे एप्लीकेशन काइंड अटेंशन सर. डिसमिसल लिखा लिखा है काइंड अटेंशन सर. डिसमिसल कैप्शन इज नॉट इन CMIS. डाउनलोड करे. My lord, for some reason, my lord, when it was listed before Honorable Justice Ramanna, my lord, he had passed an order to list this matter for dismissal, my lord. क्यों? My lord, I am not aware of that, my lord. That day, the applicant appellant was not present. I was there, my lord. My presence is there. प्रेजेंस लिखी हुई है. I don't know about it. Prior to that हो सकता है. Prior to that, I have missed once, my lord. Yes. नहीं सर, उसके उस दिन भी लिखा हुआ है नाम, तो वो उसमें प्रेजेंस लिखी हुई है. जी. Probably the translated copy was not provided. Counsel for the appellant is present. Learned counsel for the appellant is present. Learned counsel for the appellant and counsel for the respondent are present. लिखा लगा post the matter under caption for dismissal. ये सही नहीं है. My lord. क्यों डिसमिस करना है? हम कर देते हैं आज, बताओ. My lord, I want to add on admission, my lord. सुनाना है एडमिशन पे. My lord. कब के लिए लगा दें? My lord, As jointly placed in the next week. my lord. And in the meantime, the reply to the contempt petition also there is a corrected contempt petition. कर लेना. वीक चाहिए और ज्यादा चाहिए वो बता दो. मुझे जब रिप्लाई. हाँ बोलो. कौन सी कोई तारीख लगाना है? मतलब कब तक आप लोग अपनी मेहनत वो पूरी तैयारी को बता दो. मतलब 2 weeks टाइम में काइंडली तारीख बता दीजिए. 2 हफ्ते बाद की लगा देते. पुराना केस है ना. मतलब 2019 का मतलब. हाँ, एडमिशन नहीं हुआ अभी. जी मतलब बताइए तारीख बताइए. मतलब 22nd March मतलब 30 oh sir वो एकदम होगा. फर्स्ट अप्रैल करना सर. we commencing 1st April after लगा दो आप. as a second what is As jointly placed list on second. second I would like it. Regular cases serial number 10. Excuse me.
case was listed for the order dated knowledge. क्या है? MP order was passed knowledge and अरे मोशन का था civil MP knowledge. MP this इस तरह ही this is the MP and this honorable court passed the order, supply the copy today, file the report. Otherwise, case shall stand dismissed. अच्छा But the order has not been complied in the civil division knowledge. You can see MP order knowledge. This is petition of this honorable court passed the order. आज No, इसके previous में उसी कंसिडरेशन में लगा हुआ व्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड वन और आज तक कॉपी नहीं दी मैडम उन्होंने किसको कॉपी दी थी? सिविल डिवीजन की कॉपी नहीं दी मैडम उनको आएगी सिविल डिवीजन है सिविल डिवीजन एक्सपर्ट आप इसमें एमपी में हैं हम पिटिशनर एमपी में सिविल डिवीजन रिस्पॉन्डिंग है मैडम सिविल डिवीजन की कॉपी हमको सप्लाई करने का कोर्ट में ऑर्डर दिया है एमपी में बहस करो सिविल डिवीजन में कोई नहीं आएगा वो खारिज कर देते हैं तो पीएमपी ऑर्डर है साहब अरे कॉपी सप्लाई करने के लिए बहस करो एमपी मतलब मिनिस्टर नवनीत देवे को लाडू मतलब आ रहे हैं मतलब सिविल डिवीजन दूसरे की खारिज करा लो अपनी वो कंसिडरेशन में इसीलिए लगा है कि वो कंप्लायंस नहीं इसीलिए एमपी लगी और उसमें अदरवाइज जिसको बुलाना है हम बुला लेंगे बुलाओ ना बुला लेंगे 3:45 तो बज गए वो दूसरी कोर्ट में आ रहे हैं मतलब 10 मिनट बाद नहीं तो आप बहस करिए शुरू करिए मेरे पास फाइल भी 4 बजे रख लेंगे अभी आ जा रहे हैं 10 मिनट फाइल दो तो पढ़ो 10 मिनट में रख लो आ रहे हैं मतलब कोई 10 मिनट नहीं अभी बहस शुरू करो पढ़ो पढ़ना इनको दूसरी कॉपी दे दो ऑर्डर पढ़िए आप तब तक अपने किसी हाँ साथी को बोल दो फोन लगा देंगे उनको बुला लाएंगे अपना साथ में तो कोई नहीं है इतने सारे लोगों में आपने किसी को दोस्त नहीं बनाया अपना हैं जाओ भाग के बुला के लाओ सब अभी अभी हाँ 5 मिनट यही रखी हुई है फाइल जी। एडजस्ट नहीं कर रहे हैं जी जी ये बुला के लाओ सीरियल नंबर 11 चौधरी आपने कॉपी नहीं दी थी सीआर की नहीं सर दे चुका हूँ सीआर में बहस करिए आप लाइए पहले वाली फाइल पे कंप्लायंस रिपोर्ट भी है सर उसमें सीआर आप यूआर से और पिटिशनर इन सीआर वो गए हैं वकील साहब को बुलाना है जब तक आप अपनी सीआर का मैटर बताइए क्या है सर 913 का जो ऑर्डर है सर पेज नंबर 16 पे अगेंस्ट विच ऑर्डर यू हैव कम हियर पेज नंबर 16 नौ 13 के आदेश और 13 का आदेश क्या पूरा बोलिए ना हाँ, से ये एक सूट था सर सूट बैंक सूट वाज डिक्रीड सूट वाज डिक्रीड लॉर्डशिप एंड Nine 12 1958. Suit was decreed. Ex parte decree was passed in favor of the applicant lordship. what was the suit? Suit is for declaration lordship. बताइए बोलिए ना आरोप क्यों लाते हैं बता एक मिनट बताइए डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ खसरा नंबर 1794 area of 0.75 acre and 0.75 acres 75 acres 0.75 ना जी और दूसरा खसरा नंबर है 1817 हाँ एरिया 1.25 acres 1.25 acres ये सब एकड़ में चल रहा है जी सर हाँ टोटल हो गया सर 2 एकड़ हो गया जी जी सर इस सूट से डिक्री होता है सर ये स्टेट जो है जो इनकी 913 अलाउ हुई है इनको सर्विस हो गई थी लेकिन कोर्ट ने पाया कि
पेज नंबर 22 में जो आया था फाइंडिंग दी है, जो 9/13 लाओ नंबर भाई जी 9/13 की डिग्री किस पेज पर है? 9/13 की डिग्री 22 नंबर पे फाइंडिंग आई है जो। सर डिग्री किस पेज पर है? डिग्री नहीं लगाई है सर, इसमें नहीं लगाई, डिग्री नहीं लगाई है जो 88 में हुई है। 88 में डिग्री नहीं लगाई है तो उसका जो है 9/13 लगाई उन्होंने इसका शासन ने। शासन में सर क्या लगाई थी? हम पे तामील नहीं हुई। तामील नहीं हुई। हाँ फिर किस तामील 9/13 कब लगाया? 9/13 कब पेश किया? 9/13 पेश किया सर ये 24/7/2009। हाँ 22 साल का गैप था टोटल। हाँ देन 21 साल उस ऑर्डर में क्या किया फिर? 9/13 का क्या हुआ? किया सर शासन। वेयर इज द ऑर्डर? और ऑपरेटिव पार्ट है 22 नंबर, द ऑर्डर पेज नंबर 22। 20/11/16 जी सर 20/11/16 वाले को नहीं है? 26/11/16 पेज नंबर 16 से स्टार्ट होता है। 9/13 अलाउड। जी सर। और एक चीज और होती है सर, जो सूट हमारा एक्सपार्टी डिक्री हुआ था उसको रिस्पॉन्ड जो यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट है प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट, उन्होंने हमारी जो डिक्री थी उसको सेटिसाइड करने के लिए सूट लगाया था बाद में। तो उस सूट में हमने काउंटर क्लेम भी लगाया था। हमारा काउंटर क्लेम उनका सूट डिसमिस हुआ, फिर अपील लगाई तो मतलब उनका दावा खारिज हुआ रही है और हमारा डिग्री हो गया। हाँ वो हमारा काउंटर क्लेम भी खारिज किया। खारिज पे फिर इन्होंने अपील लगा, हमने काउंटर क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाई। तो हमारी काउंटर अपील अलाउ हुई और इनका सूट जो था जो हमारी 1988 की डिग्री को सेटिसाइड करने का वो डिसमिस कंफर्म हुआ अपील में जाके। फिर क्या हुआ? फिर ये स्टेट ने 2000 नहीं वो तो प्राइवेट पार्टी से हाँ वो जीत गया सर, उसकी कोई अपील नहीं हुई सर। उसको फिर रिलीवेंट नहीं है। रिलीवेंट है शासन। शासन सर, शासन का क्या हुआ? शासन वहां भी एक्स पार्टी था अपील में भी। बहुत काम रहते हैं शासन को। नहीं सर उसमें देखिए जो उन्होंने डेट लिखी है, जो एक डेट आई है, रिकॉर्ड आया होगा ना सूट का पुराना रिकॉर्ड भी कॉल किया है कि उस तारीख को जो ऑर्डर होता है कि शासन को नोटिस समन्स जो है प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुए सर। 11/10/1988 की ऑर्डर शीट है सर और हमने समन्स लगाए हुए हैं सर एनेक्चर MR। ये प्रॉपर्ली सर्व हुआ इनको। पेज नंबर 19 देखें, 92 देखें सर। नहीं ये जो है आपने दावा लगाया 6/4/88 को। जी सर। ये हमारे फेवर में डिक्री हुई। 21 साल बाद शासन आता है कि 9/13 की एप्लीकेशन लेके कि हमें जो समन्स थे केस के सूट के वो प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुए। पेज नंबर 22 में फाइंडिंग दी गई है सर। आवेदक को दावे का नोटिस भी समयक रूप से तामील हुआ था, ये प्रमाणित नहीं है। और उस सिविल सूट में सर 11/10/1988 की ऑर्डर शीट है, उसमें स्पेसिफिक लैंडेड कोर्ट में लिखा है कि इनको समन सर्व हुए हैं, उसके बावजूद ये हाजिर नहीं तो उनको एक्स पार्टी किया गया। वो जो डिग्री 1988 की हमारे प्रोग्राम थी एप्लेट कोर्ट से भी कंफर्म हो गई है, उसको भी इन्होंने चैलेंज नहीं किया है सेकंड अपील में। आपने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, तामील हो गई है मान लेते हैं, इसके बाद ये ऑर्डर शीट पढ़ लीजिए।
हम उस चीज पे जा ही नहीं रहे, तामील हुई कि नहीं हुई। पेज नंबर 41। ये देखना यार, वो पुरानी ऑर्डर से फटे नहीं है। मैं यही देखना चाह रहा था, जो वही तो अपने आप ही दिख गया। खोल लीजिए, मोड़िए मत, खोल लीजिए, खोल लीजिए, चुप रहेगा। इधर लेफ्ट साइड में तामील हो गई। तो आप बता ना 11 क्या बोल रहे थे आप? क्या है बताइए मेरे को, याद है, अब याद देख लिया, क्या है वो तामील वाला ऑर्डर डेट का है? 11/10/88। चलो इसके बाद आइए, राइट साइड में आइए जी सर। नीचे की तरफ आप आ जाओ से, क्या है देखो सबसे नीचे। प्रतिवादी सम्मन तामील प्राप्त है परंतु प्रतिवादी अनुपस्थित। इसके बाद चलो कंटिन्यू पर, उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, अतः प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण इसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की हो गया। इसके बाद पढ़ो। जी सर। प्रकरण इतना एक पक्षीय किया जाता है आगामी पेशी पर वादी। आवश्यक बातों में कौन टाइम वेस्ट कर रहे, पेन से ना थोड़ा वादी द्वारा प्रतिपूर्व से एक पक्षी से। आगे चलो। वादी साक्षी अनुपस्थित है। वादी के इतने पे साक्ष्य को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है आगामी पेशे। वादी सहित इतना प्रतिवादी पूर्व से एक पक्ष, वादी साक्षी का इतने के पुनः किया गया है। क्या ये मतलब कि वादी साक्षी क्रमांक मूसा तथा साक्षी क्रमांक 2 हिदायतुल्लाह खान को पुनः परीक्षा किया गया सर। वादी ने अपने नहीं पढ़ पा रहे, क्या वकालत करी होगी आपने? समाप्त घोषणा की जाती है। हाँ, ये है नीचे मतलब की बात। वादी ने अपने साथ की समाप्त घोषणा की जाती, प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु किया। आपको इसके बीच में कुछ लाइन नहीं दिखी? एक लाइन लिखी हुई है, वो क्या लिखी है लंबी सी? वकील साहब आप जो है शासन, चलिए हमें बताइए। अब आपको दिख ही नहीं रहा है तो क्या करें? आपको मतलब की लाइन नहीं दिखी जो आपके खिलाफ है सर? तीन पॉइंट पे लिखा है वादी साक्ष्य हो गया सर। इसके नीचे पुनः लिखा है, वो नहीं पढ़ पा रहे? अंतिम क्या अंतिम? इसके नीचे और कुछ नहीं लिखा? क्या कर रहे हो आप? देखो, आपको भरोसा करके आपको फाइल दे रहे तो हम नहीं देते। आप उनको पढ़ ही नहीं रहे, देख भी रहे हो। आपको एक ही लाइन तो लिखी है, ज्यादा लिखा कहाँ है? अच्छा, लास्ट वाला तो ना वादी ने साक्ष्य घोषित कर दी जी सर। उसके बाद क्या लिखा है पढ़ो। वादी ने मुताबिक लिस्ट 1 से 12 तक दस्तावेज पेश किए हैं जो प्रकरण में हो गया। छोड़ो, आप एक लाइन नहीं पढ़ा, दुनिया सुने कम से कम, जिसको समझ में आ जाए क्या लिखा है। दिस इज योर कंडक्ट में लिखा है, वादी ने मुताबिक लिस्ट क्रमांक 1 से 12 तक दस्तावेज पेश किए जो प्रकरण में नस्ती किए गए। इसका मतलब ये आपने अपनी गवाही दे दी, गवाही देने के बाद अंतिम तर्क सुने गए, उसके बाद आपने अंतिम स्टेज पे अपने कागज पेश किए। इसका मतलब एट द टाइम व्हेन द डिफेंडेंट वाज प्रोसीडेड एक्स पार्टी एंड यू लेड योर एविडेंस, दीज डॉक्यूमेंट्स वर नॉट ऑन रिकॉर्ड। इसका मीनिंग ये है, तब कोर्ट जब इसको करना चाह रही थी तो उसके बाद फिर दूसरा नोटिस जारी करती, तब एक्स पार्टी डिग्री हो सकती थी। लेकिन सर जो समझ गया मैं, लेकिन जो 11/10/1988 का ऑर्डर लिया तामील हो गई, तामील हो गया, कोई हाजिर गवाही दे दी जी सर, अपने आप को उन्मुक्त कर दिया, साक्ष्य समाप्त हो गई। साक्ष्य समाप्त होने के बाद तर्क सुन लिए गए, तर्क सुन लिए गए, उसके बाद और 12 कागज पेश करते हैं जिस पर जजमेंट होता है। तो जब जिस दिन आपने कोई कागज ही पेश नहीं किए थे, आपकी गवाही पूरी हो गई, तर्क सुन गए, जो दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए गए, तो केस रीओपन हो गया। जब रीओपन हो गया तो नोटिस वाला करती कोर्ट, कोई गलती नहीं है इसमें। तो सर जो अपील होती है इसकी, जो सेटिसाइड कराने के लिए, उसमें भी शासन हाजिर नहीं है, अपील जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट है। प्राइवेट रिस्पोंडेंट और आप तो मिले हुए हो ना? नहीं सर, मिले हुए नहीं है,
इससे लग रहा है आपके नहीं नहीं, हम तो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम तो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हमारी जो डिग्री है। द्वारा दोनों लोग तो मिले हुए हो ना, कि जब भाई जब कोई व्यक्ति हारने जीतने के बाद अपील नहीं करे एक दूसरा, तो ऐसा मन में विचार आता है कि आप लोग जो है गवर्नमेंट लैंड को हड़पना चाहते हो। नहीं, हम तो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन में उन्होंने एजिटेट किया हमारे खिलाफ। ऐसा लगता है, जब कभी ऐसा होता है तो ऐसा प्रतीत होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रतीत होता है ऐसा, क्योंकि शासन 9-13 लगा रहे, आप लोग लड़ भी रहे हो, लड़ने के बाद शांत हो जाते हो किसी जगह पे जाके, लड़ के एक दूसरे को मालिक घोषित करा दिया आपने। और ये यहाँ देखो, आपकी गवाही हो गई, आपके तर्क सुन गए, उसके बाद दस्तावेज लगाया। दिस इज द ओनली ग्राउंड टू सेटिस्फाइड द एक्सपायरी डिक्री, ऑल्दो दैट हैज ऑलरेडी बीन सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट। बताइए, ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड मिल गया। रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद मिल भी नहीं पाता। और दूसरी सर, ये हमारी जो डिग्री है वो एपलेट कोर्ट से कंफर्म हुई है, वो स्टेट ने चैलेंज नहीं किया सर। वो क्यों करेगी स्टेट चैलेंज, वो तो 9-13 में आ गई ना। और थर्ड ग्राउंड ये है कि एक ही एप्लीकेशन में इन्होंने तीन कोर्ट की डिग्री को चैलेंज किया सर, सेपरेट एप्लीकेशन मूव नहीं की, एक ही एप्लीकेशन में। गवर्नमेंट के खिलाफ तो यही डिग्री एक्सपायरी है ना, ये भी है और एपलेट कोर्ट की भी। उसमें इनकी डिग्री तो उन्होंने दूसरों ने चैलेंज की थी, स्टेट को पार्टी बनाया था, उसमें भी हाजिर नहीं हुए। स्टेट को पार्टी कहाँ बनाया था आपने? स्टेट को ऑर्डर में आया सर, वो तामी लोग ये यू कैन रेज दिस ग्राउंड फॉर पर्पस ऑफ नॉलेज, बताया तो एक्सपायरी डिग्री तो यही मानी जाएगी ना। लेकिन जो ऑर्डर हो रहा, फाइंडिंग आई है कि हमें प्रॉपर्ली सम्मन सर्व नहीं हुए सर। नहीं हुए, लिख तो रहा कि आपने जो है गवाही के बाद सारे सम्मन सर्व थे इनको, ये एक्सपायरी घोषित हुआ, ये 11/10/1988 का जो ऑर्डर है। बहुत बड़ा काम आपने कर दिया, अनावश्यक दस्तावेज बाद में लगा दिए। देखिए, मैं आई एम डिसमिसिंग दिस सिविल रिवीजन हैज बीन प्रेफर्ड। You are supporting the petitioner ना? नहीं, हम तो लॉर्ड साहब, आई एम अपेयरिंग आइटम नंबर 10। अभी उसको देखते हैं जी। This civil revision has been preferred by applicant public plaintiff. जी Plaintiff in arranging the order dated 26/11/2016 passed by 5th Civil Judge Class 2 District Schedule in MJC number 2/2009, thereby trial court has allowed response number 1। तो आपने रिवीजन में क्या लिखा है? रिस्पॉन्स नंबर 1 को प्लेंटिफ बताया है। एप्लीकेशन लगाई थी, इसमें प्लेंटिफ जो 9/13 की एप्लीकेशन है सर, प्लेंटिफ बोलते हैं वो टाइप 9/13 में आदमी प्लेंटिफ की जगह डिफेंडेंट हो जाता है, डिफेंडेंट में प्लेंटिफ हो जाता है। ऐसा क्यों कहते हो? कम से कम चुप रह जाओ, या सॉरी बोल नहीं बोल पा रहे तो चुप ही रह जाओ और एक्सप्लेनेशन और दे रहे हो आप। तो सीधा मतलब ये है कि आपको लिखने या टाइप करवाने वाले के बाद पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रिस्पॉन्स नंबर 1 ऑब्लिक डिफेंडेंट first OPS application under order 9/13 CPC has been allowed and ex parte judgment and decree dated 9/12/1988 has been 9/2 allowed and ex parte judgment and decree dated 9/12/1988 has been satisfied. The council submit that the civil suit filed against the state government as state government along with other 6 private persons summons of plaintiff was served on the defendant for one state, but none had appeared, therefore court below after recording satisfaction about
about service of summons proceeded ex parte against the defendant, against the state government of the defendant one as well as other defendants. While order dated 11/10/2088. He submits that this that the ex parte judgment and decree dated November 88 was challenged by other defendants, है ना? Other private defendants by filing regular civil appeal. रेगुलर सिविल सूट लो। अच्छा वो उसकी पहले डिक्री सेटिसाइड करने का सूट लगाया। बहुत अच्छा किया। By filing original civil suit against the defendant, against the plaintiff and state government. Against the plaintiff. उसमें आपने काउंटर क्लेम लगाया हमने। In which the applicant, आप अकेले ही थे ना उसमें? हाँ। Applicant मुंसा कुमार। Applicants हैं और KUMHAR कुमार filed counter claim in which the state government was also was party, but it did not appear and it was proceeded ex parte against the state government. उसमें भी state government ex parte। So ultimately after trial the suit and counter claim both were dismissed by trial court by judgment and decree dated 12/8/2005 12/8/2005 against which आपने क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाए थे अगेंस्ट विच द प्राइवेट डिफेंडेंट्स प्रेफर्ड रेगुलर सिविल अपील एंड द प्लेंटिफ फाइल्ड क्रॉस ऑब्जेक्शन which and the concerning appellate court decided the matter by judgment and decree dated 16/5/2008 16/5/2008 whereby appeal of the private defendant has been dismissed. Whereby the civil appeal filed by the private defendant was dismissed and by allowing the cross objection of the plaintiff applicant. Cross objection is कुछ उसका Cross objection. the suit was decreed. So the learned counsel submit that despite all this defendant states did not challenge the ex parte judgment and decree timely and filed an application under order 9/13 CPC on 24/7/2009 with delay of 21 years. एविडेंस हुई थी इसमें एविडेंस हुई होगी ना है सर पेज नंबर 20 में है which without taking into consideration the material available on record has been allowed after condoning the delay of more than 21 years na yes so he submits that as in the civil suit the service the summons was served on the respondent state therefore there was no reason to set aside the ex parte judgment and decree. कोई जजमेंट वगैरह साइड करना है आपको कोई जजमेंट कोई डिसीजन तो साइड नहीं करना ना with these submissions with the afforded submissions learned counsel praised for allowing the second division. आप किसके लिए हाजिर हो रहे हैं इसमें नाम नंबर 1 के लिए MS ममता मिश्रा और नंबर 1 5 के लिए learned counsel appearing for the respondent number 1 supports the input order
and raise for dismissal of the civil division. Our number 5 के लिए नोट सर. only 5. Yes, madam. Learned counsel appealing for the spot number 5. Also support the improved order. Yes, ma'am. Raise for dismissal of the civil division. Heard learned counsel for the parties and carry the report. ऐसा इसमें तामील की जो बात करी थी वो इसमें समन लगा है? इसमें समन लगा हुआ है क्या वो रिकॉर्ड में देखा, लेकिन हमने अपनी पिटीशन में लगाया है सर. सही कौन सा लगा है? पेज नंबर 91 में से 91 से लेके 91 हाँ पेज ही है इसमें कम है पेज 71 तक है नहीं सॉरी ये एमपी है 91 हाँ 91 से लेके 100 तक. इतने सारे सम्मान लगाए हैं केवल शासन का बताइए हाँ शासन ही कहना सर. शासन के इतने सम्मान क्यों हैं? कलेक्टर शेड्यूल डबल कॉपी हो गई. इसमें कहाँ लिखा है कि दावे की कॉपी भी सप्लाई कराई? वो दावे की कॉपी लगाई थी क्या साथ में? सर वो तो सर हो गया हमको, फिर वो अपियर नहीं हुए. ये आया ऑर्डर शीट में, आफ्टर सर्विस नोबडी अपियर. सर्विस तो हो ही जाती है हाँ. लेकिन इसमें दावे की कॉपी नहीं दिख रही है लगी हुई. वो ठीक है क्या a copy of perusal of record shows that although summons of plaintiff was issued to the respondent state, but there is no mention in the summons that it was served on the respondent state along with the copy of plaint. The record of civil suit also shows that on 11/10/88 the court recorded the factum of service of notice on the defendant and for want of appearance of the defendant the matter was proceeded ex parte. Suit was proceeded ex parte with the further direction to the plaintiff to keep his witnesses present before the court on 2/11/88. Stop on 2/11/88 the time was granted to plaintiff to adduce evidence his ex parte evidence.
which he adduced on 1/12, which he adduced on the next date, 1/12/88, and declared his evidence closed. So on the same date, the court fixed the case for, court heard the final argument and fixed the case for judgment for 9/12/88. But later on, order sheet was written to the effect that the plaintiff submitted documents as per documents number 1 to 12 as per list, which were taken on record without filing any application in that regard, and thereafter court passed the final judgment against the defendants. Full stop. अच्छा, ये वाला फैक्ट ट्रायल कोर्ट ने तो देखा नहीं होगा शायद, ये वाला दस्तावेज वाला इस ऑर्डर में मेंशन किया है कि नहीं? Although the factum of taking documents on record has not been considered by trial court while passing the impugned order, setting aside ex parte judgment and decree, but in my considered opinion, taking the documents on record after closure of arguments was sufficient to set aside the ex parte judgment and decree passed in favor of the plaintiff, because first of all, the documents which were taken on record by trial court could not have been taken on record without any application in that regard, and if in any case the trial court was of the opinion that documents filed by the plaintiff deserve to be taken on record, then trial court ought to have issued fresh summons to the defendants before proceeding further in the suit. Next, upon in view of the findings reported by trial court for setting aside the ex parte judgment and decree, and in view of the aforesaid fact, this court, in the limited scope of civil division under section 115 of CPC, does not find any illegality in setting aside the impugned order whereby trial court has set aside ex parte judgment and decree. Kindly the civil division shall say thereby dismissed pending application. इसमें क्या है? Lordship, I have preferred this the petition against the impugned order dated 7/1/2023. किस दावे से अराइज हो रही है? ये जो 12/2005 का हमारा दावा खारिज हुआ, तो फिर अपील की थी हमने, और 16/5/8 की, तो वो अपील हमारे खिलाफ हमारा तो खारिज हो गई अपील, और इनका क्रॉस क्लेम अलाउ कर दिया, तो उसकी उन्होंने एग्जीक्यूशन लगा दिया। अच्छा, और जो वो 16/5 क्या डिक्री क्या हुई है? वो जो शासन की जमीन थी, जो भी कोर्ट में डिक्री हुई क्या है? वो हुई थी 2 खसरों के संबंध में लॉर्डशिप। वो खसरा नंबर थे 1794 और 1817, जबकि हमको पट्टा मिला हुआ है दूसरे खसरे पे, उसका नंबर है 1816। हम उसकी कॉपी भी लगाई, दैट इज एन एग्जैक्ट P2 मिलोड एट पेज 10। तो ये जो है डिक्री को एग्जीक्यूट करना नहीं कर सकते उसको, तो वैसे इसको विड्रॉ कर लीजिए। मेहनत क्यों करवा रहे? जी ठीक। अब जाके वहां आवेदन लगाइए कि नाउ दिस डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड, काइंडली डिसमिस दिस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, एंड आफ्टर आर्गुमेंट्स आर डन द नेक्स्ट काउंसिल फॉर द petitioner prays for withdrawal of this application
with this miscellaneous petitions, with the liberty to file appropriate application or objection before the executing court Yes, ma'am. regarding executability of the decree. ठीक है? Yes. Share being reasonable. Obliging. In the light of decision of civil tribunal. No, withdrawal will be right of civil, in the right of order dated to pass in civil division. Obliging. Then Request matter serial number 51. थोड़ा इसको सुनने में सर टाइम लगेगा। लगेगा आपको देख के हमें लगा कि आप इस समय पर आए हो। नहीं मेंशन किया था रिस्टोरेशन ऑफ कंटेम्प्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन दरखास्त में। सो इट विल टेक सम टाइम, तो कोई दिन आप रख दे सर। बताइए when do you want? एक आध हफ्ते बाद तक तो कोई दिन। As jointly parade list on ये सर करते हैं 18 वाली वीक में। list in the week coming from 18. Serial number 54. मेंशन है बता दो। Serial number 80. सर दो कनेक्टेड सेकेंड अपील है, दोनों में कंप्रोमाइज हो गया है तो 80 जी मैडम विड्रॉ करना है आपको। नहीं विड्रॉ नहीं करना, तो उसका कंप्रोमाइज का वेरिफिकेशन हो जाए उसके लिए। वेरिफिकेशन आवेदन लगा दिया जी वेरिफिकेशन नहीं हुआ अभी। नहीं सर, कंप्रोमाइज एप्लीकेशन। केसेस में आवेदन लगाया आपने? जी जी। कौन सी तारीख चाहिए आपको हाजिर होने के लिए? कोई भी हफ्ते, एक हफ्ते में तारीख। मैडम तारीख आपको बताना पड़ेगा मैडम, आपके पक्षकार आएंगे, मैं कैसे तारीख तय कर सकता हूँ आपकी? सर कोई भी मंगल बुधवार मैडम तारीख आपके सामने कैलेंडर दिया है आपकी सुविधा के लिए, देखिए घर से तय करके आना चाहिए, पक्षकार से पूछना चाहिए किस तारीख को आ जाओगे। आप लोग यहाँ आके इसमें भी टाइम वेस्ट करते हो। पक्षकार कहाँ है, डिंडोरी का है कि अमरकंटक का है, हमें क्या पता? सागर का नेक्स्ट वीक में कोई भी डेट दी। मैडम डेट आपके सामने, हमने कैलेंडर हटा देंगे यदि आप। सर 14 तारीख के लिए 14 तारीख लगा दीजिए और वो दोनों वहां भेज दीजिए। आप उसमें देखिए Serial number 99. आफ्टर 2 वीक्स कर दें इसको। सीनियर इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट इट्स एन अपील। ये आरसीटी की अपील का केस में हम लोग द क्लेम हैज बीन अलाउड इन आफ्टर में क्लेम किया होगा। जी मिलर मैंने क्या मतलब आरसीटी की अपील के खिलाफ आए ये जी ऑर्डर के खिलाफ आए। यस मिलर देन मिलर द सेम हैज बीन अलाउड इन आवर फेवर मिलर। आपको क्या तकलीफ है? Unless 50% of the amount has already been given to us, my lord. We are only seeking the release of the another 50%. तो 8 लाख रुपए का 50% धीरे धीरे खर्च करो एकदम। सर कुछ जमा रहने दो। This has been pending since अरे कुछ नहीं है कि 2019 केसेस पेंडिंग है वो टाइम। Sir, after 2 weeks, sir, but I'm not here. लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स। Advise you not, sir. Saurabh Srivastava. 101. My lord, in last hour, my lord is directly appear to the contender manner. बताइए क्या कर दिया नेक्स्ट? My lord, kindly see the order dated 16/2021, where the in WP, this honorable court has passed the order that the deal will be concluded after his retirement. This order is passed on 16/8/2021. And afterward, my lord, I have filed a contempt petition before this honorable court. Considering the limited period, this petition is disposed of, directing the respondent authority to conclude the proceedings of departmental inquiry. Yes, my lord.
initiated against the petitioner expeditiously, preferably without the retirement of the petitioner. Yes, ma'am. इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंक्लूड कब कंप्लीट हो गई मैडम. The last order मैडम, there is मैडम टू डिपार्टमेंट इंक्वायरी मैडम एक कंक्लूड हो चुकी थी, दूसरी भी कंक्लूड हो गई. सिर्फ उसमें मैडम हैव डायरेक्टेड टू पर्सनल प्रेजेंस मैडम बिकॉज ऑफ मैडम की इनकी सजा जो इनको निर्धारित हुई थी मैडम वो अभी तक क्यों नहीं दी गई है, इसके लिए उनकी प्रेजेंस की गई थी मैडम. इनको सजा दी गई मैडम क्या? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैडम, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उसको जो पनिशमेंट दिया वो अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ. बस फिर मैडम उनका ये कहना है कि हमने उसमें जो प्रतिवेदन था उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको पीएससी को डिसाइड करना है और पीएससी में भी डिसाइड हुआ नहीं है मैडम. वो जो रिस्पोंडेंट का वर्क था मैडम उन्होंने कंप्लीट कर दिया मैडम उसको. अब जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो इनको सजा हुई है मैडम उसके लिए क्या सजा हुई है? एक वेतन वृद्धि रोकी गई है मैडम. वेतन वृद्धि की समानुपाती राशि वसूल किए जाने का निर्णय लिया गया है. Order yet order has been, punishment has been not brought. They have take a decision only. उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो जब तक ये ऑर्डर नहीं होता था, जब तक ये deprived to get the pension and fund, he's from last 2 years he is depriving. So you are not being paid the pension etc. No. इन्होंने ये पूरा इंक्वायरी की वजह से सब रोका हुआ है उसको. सर इसमें चूंकि जाके पेंशन रोक सकते हैं आप. सर विभागीय जांच करके प्रकरण ठीक है कर दिया आपने. आप जाना सर वहाँ से पीएससी को जाना, पीएससी से फिर मंत्री परिषद को जाएगा तब पनिशमेंट डिसाइड होगा. मतलब उस बीच आपको जेल जाना होगा ऐसा है? मतलब वो ये सब नहीं होगा तो आपको जाना पड़ेगा कहीं. आपको ये समझ में नहीं आ रहा भाई आपने उसको पनिश कर दिया, उसको पनिशमेंट भी नहीं दे सकते आप. विभागीय जांच का मैंने पनिशमेंट दे दिया तो या तो फिर उसकी पेंशन रिलीज करिए कल की कल. शासन स्तर का शासन स्तर पे पार्टी नहीं बनाया मैडम. नहीं करना होगा. आप बताइए क्या कौन है जिसको काम करना है? मजाक सा कर रहे हो जो है किसी के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ. ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा लग रहा है क्या? यू आर ऑल्सो वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट. आपको नहीं लग रहा है इसके साथ कोई मजाक सा कर रहे हो? आपने पनिश कर दिया तो उसको पनिश करने में भी प्रॉब्लम है आपको. सडनली पीएससी से सर उसका अभिनंदन होगा सर, फिर कैबिनेट को जाएगा, फिर डिसाइड होगा सर पनिशमेंट के लिए. 25-30 साल लगेंगे जब तक मर जाएगा. एक टाइम बता दो कितना लगेगा उसमें. क्या मजाक सा नहीं लग रहा आपको? पीएससी जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा. जब आपके मतलब के काम होते हैं तो सेम डे नहीं करा देते आप. जब आपको किसी को बड़े आदमी का कोई काम होता है तो अपने स्तर से 2 मिनट में नहीं हो जाता. वो कौन करेगा? उसका नाम बताइए. मंत्री बोले छोड़ दीजिए आप मेरे को. मुझे नहीं पता कौन मंत्री परिषद है और क्या है. आपका जो वहाँ जो है जो आपका वो कौन है डिपार्टमेंट का? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा. बताइए. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की प्रेजेंस का ऑर्डर कर देते हैं. क्या उससे पूछिए आज ही फोन लगा के और कल सवेरे बताइए कि क्या कर सकते हैं वो. अदरवाइज ही हैज टू रिमेन प्रेजेंट इवन विदाउट देयर बीइंग एनी इम्प्लीमेंट. कल सवेरे आइए आप. तुम्हारा अभी जाके कर लीजिए. शाम को 5 बजे के पहले बैठे मिल जाएंगे आपके अधिकारी. ये गलत है. उसकी पेंशन नहीं मिल रही है. आपको भी नहीं लग रहा ऐसा? मतलब आई हैव रिटन द लेटर टू मैनी टाइम मैडम. इनका ये कहना था कि मैडम उसमें आपने करना था डी पूरी कर दी. रिजल्ट जो होना है वो करके उसकी पेंशन बांधना है. इसमें मैंने तकरीबन इससे पूछा था 2 महीने का समय इसमें और चाहिए था मैडम. नहीं मिलेगा उनको, कोई समय नहीं देंगे. बी रेडी. आप तैयार रहिए. आई विल होल्डिंग गिल्टी क्योंकि अभी वही दिख रहे हैं सामने. जवाब आपने उनके दिया है. आप कर लीजिए और मैं साथ में जो बोलो तो इसमें वाला नेक्स्ट वीक कर दे मैडम. नहीं नेक्स्ट वीक कर दे मैडम. नेक्स्ट वीक कर दे मैडम. नेक्स्ट वीक के मैं 1 हफ्ते का समय दे दो. 1 हफ्ते में करवा देंगे. अभी आप ऐसा करो 15 रखो कल करो दिन. आइए ना आप ही के चलते. पीएससी से सर उसका अनुमोदन होना है. बताइए क्या स्थिति है. वकील साहब से बात कराइए. कोई भी हो, सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई तो होगा. सर अभी प्रकरण में सर
मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन होना सर, उसके पश्चात जाएगा सर पीएससी को सहमति के लिए। अनुमोदन में प्रशासकीय परिषद को जाएगा। आपको सजा देने में भी टाइम लग रहा है। सर उनका पार्ट है सर, उनको डिसाइड करना है सर पीएससी को। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, ये तय हो गया। डिपार्टमेंट लेवल का मैटर पूरा किया जा चुका सर, पीएससी स्तर का मामला फिर जाएगा सर वो मंत्री परिषद से। एक हफ्ते का समय देगा मैडम ना, आई वैलिड आप मंडे को रख देते हैं। आप देखिएगा पर्सनली वो समझ नहीं रहे अभी बात। 2021 में रिटायर हो गया, 2 साल में उनकी पनिशमेंट नहीं डिसाइड हो पाया। ये है कि ऐसा तो कुछ करने नहीं है आपको, और उसको आपको पेंशन देना है तो दीजिए, उसकी मना करिए। मना कैसे करते हैं? बोलिए कि आपका पेंशन का भी एंटाइटलमेंट नहीं है, ऑर्डर पास करिए उसके सब, जिससे वो कर सके। उसको मैंने कर दिया मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट। My humble request is my item was next. Request matter at 125 and 108. Unfortunately, both are present, my lord. It can be. हम लोग दोनों उपस्थित हैं। फॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। उपस्थित हैं फॉर्चुनेटली। So my lord, we are making. My lord, last time my lord was hearing the matter. उस दिन आपने सुना था, तो आज के लिए रिक्वेस्ट किया था सर, तो उस दिन आपने एक्सीड कर लिया था। वो आपने पेपर्स पेश कर दिए? इनको करना था सर, एक मैटर में इनको करना था, आपने को इनको डायरेक्शन थे। पेश कर दिए पेपर्स जो का? अभी नहीं आए सर। मैं पेश कर देता हूँ सर, अगर मुझे अनुमति दे दे तो मेरे पास तो है सारे। आप बताइए क्या करना है, तारीख बताइए। सर 8 को रखते हैं सर, टॉप ऑफ द बोर्ड रखते हैं सर उसको। ये तो छुट्टी है ना? 8/4 को छुट्टी है। 8/4 नहीं 8/4 सर। जॉइंटली परेड लिस्ट ऑन 8/4 सर, 2 है सर, 2 आइटम है सर, उसको दोनों को टॉप ऑफ द लिस्ट लग दें सर। 108 और 125 हम दोनों साथी हैं सर। 108 और 125 पेश हुए में टॉप ऑफ द लिस्ट लगा नहीं सर। उस दिन हम तो दस्तावेज तो 1 वीक में पेश कर देंगे सर, उस दिन सुन लें। 8/4 लगा 108 और 125 आइटम नंबर 116 लॉर्डशिप कंटेम्प्ट पिटीशन लॉर्डशिप मेंशन में था लॉर्डशिप, कोर्ट से पहले जनवरी से कोर्ट से डाली थे, अब लगाते लॉर्डशिप 16 लॉर्डशिप। क्या कंटेम्प्ट है लॉर्डशिप नगर निगम द्वारा जो कंप्लायंस किया गया है, ये रेट पिटीशन के ऑर्डर के बेस पे कंप्लायंस किया गया है, जबकि हमारा लोगों 3 के डायरेक्शन उसमें रिलैक्सेशन मिला था। ब्लूबी में चले जाओ ना। लॉर्डशिप कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था? हाईकोर्ट ने किया था रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का। फिर डिसाइड रिप्रेजेंटेशन यही नहीं है? नहीं लॉर्डशिप, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना ऑर्डर कहा है कि रिप्लाई के साथ उन्होंने रेट पिटीशन का ऑर्डर लगा दिया है, जबकि हम रिमांड होकर आए थे रेट अपील से, तब हमारे रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने को कहा था। मैनेजर रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं किया उन्होंने? लॉर्डशिप नहीं किया। नोटिस जारी करना है? नोटिस ऑलरेडी रिसीव्ड बाय मिस्टर विजय चौधरी सजेस्टेड टुडे लॉर्डशिप। उसको एनआर में रहने दो। लॉर्डशिप एनआर में लिस्ट नहीं होता लॉर्डशिप, एक बार के तो अपने आप लगेगा ना। ये क्या फ्लिप पे लगा था लॉर्डशिप, उसमें जनवरी में जनवरी एनआर में तो आना ही आना है वो तो। लॉर्डशिप एनआर जनवरी का भी था, उसमें एक ही बार लगा था कोर्ट स्लिप पे, दोबारा नेक्स्ट वीक कर दें लॉर्डशिप। नहीं डेट एनआर रोजी आता है, हम तो एनआर की वजह से हम दुखी हैं, एनआर की वजह से। 22/1 को लिस्ट कोर्ट स्लिप पे लगा था। एनआर का मतलब होता है हम अपना काम नहीं कर पाए आज। 22/1 को नहीं एनआर हुआ था, उसके बाद लिस्ट नहीं हुआ था। 22/1 को अपना काम नहीं कर पाए। कोर्ट स्लिप पे दूसरी बार लगा है, कोर्ट स्लिप पे दूसरी बार लगा है लॉर्डशिप। नेक्स्ट वीक सर सीरियल नंबर 12 रीच नहीं करा, उसको 2 हफ्ते बाद कर। सीरियल नंबर 12 रीच नहीं किया? वो तो एनआर होगा ना? एनआर सर वो 3 बार से कंटिन्यूस लग रहा है नंबर नहीं आ रहा। मैं क्या कहूँ, एनआर की लिस्ट से अलग करके 2 हफ्ते बाद की कोई डेट दे दें। कौन सा 12 नंबर सर? नहीं वो है ना रिवीजन अपने 2 दिन बाद माय लॉर्ड अजान दो जी। क्या पॉइंट है? 7-11 है 11 तो बनने पड़े आप 2-4 रिवीजनों को। नहीं अभी सारी जितनी भी रिवीजन है ना कल लगा लगाते हैं सर। Lordship, I'm making request in item 118. Lordship, this is the MP. And ये लिख देना it to possibility of time the case could not be taken up list tomorrow at the top of the list। जितनी MR NCR सब लगा। Lordship, I'm making request in item 118. Lordship, I am the respondent husband. Lordship, in this case, Lordship, मेरी vegetation rights पे यहाँ से stay हुआ है Lordship। I filed an application under Wards and Virgin Act Lordship for vegetation rights। समझा नहीं क्या कह रहे हो आप? Lordship, मैं respondent हूँ इसमें and I am the husband Lordship। नंबर है 118 Lordship, request में था आज। तो क्या चाहते हैं आप? Lordship, इसमें फाइनल ईयरिंग नहीं होना है Lordship। स्टे के कारण मैं अपनी लड़की से मिल नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पे इंट्रीम ऑर्डर था
कि संडे के दिन मेडिटेशन राइट्स थे 15 दिन में एक बार मिलने के। क्या करते हो आप? लॉर्डशिप मतलब क्या करते हो आप? क्या धंधा करते हो? लॉर्डशिप हाँ ना, काम करते हो? लॉर्डशिप मैं अपना पर्सनल बिजनेस करता हूँ वहाँ पे। कहाँ पे बिजनेस? FIR is already has been annexed, my lord. Kindly see that FIR. Lordship, FIR मतलब पूरे साल का बने my lord. And we have not filed any IA for vacating stay. करते हो? लॉर्डशिप मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो? अरे क्या बिजनेस करते हो? कहाँ करते हो? बच्चा कहाँ रहता है? ये सब जरूरी नहीं है। बिजनेस करके बंद करके जाओगे मिलने उसकी जगह, तो उसके नाम की एफडी करा के मम्मी को दे दो। उसके एक उसके नाम की एफडी करा के उसकी माताजी को भेजो। 1 लाख 2 लाख जो भी आप कमाते हो हर महीने। माताजी ने लॉर्डशिप 3 FIR समाजा की इसमें करके रखी हुई है। बच्चे के नाम से कराओ ना FDR। लाइए बच्चे के नाम FDR करा के लाइए, अगली तारीख को 2 लाख रुपए की, फिर विजिट कराएंगे आपको। They have not filed an IA for vacating stay, my lord. IA has रुपए लेकर आने वाले हैं और आप अपन MP में लॉर्डशिप MP में रिप्लाई नहीं होता है, उनको बता दीजिए। पहले बच्चे के नाम पैसा इकट्ठा करो, उसको मिलने से उससे क्या फायदा होगा? माँ उसकी देखभाल कर ही रही है, उसके नाम पहले पैसे जमा कराओ, उसके मन में आपके प्रति सद्भावना आएगी तो खुद ही मिलने चल के आएगा, भाग कर आएगा तो पिताजी मेरा लिए कितना काम कर रहे हैं। टू डू समथिंग इन राइटिंग। 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए 50,000 उसके नाम की FDR बना और उसको भेजो। भले वो 5 साल तक जो है हैंड कैश ना हो पाएगी, अलग मैटर, क्योंकि आप तो आप ही के नाम होगी वो बीइंग गार्जियन, है ना। रही कुछ ऐसा करिए। चलिए नेक्स्ट। सब आइटम नंबर 54 रेस्टोरेशन में ऑर्डर हो गया था, उसमें नंबर गलत हो गया है। 54 नंबर होना था, क्या हो गया साहब? होना था 9040 of 2023, हो गया है साहब 9040 of 2020 9040 of 2020 हो गया है। क्या होना था? 23 होना था सर। अच्छा हाँ। तो गलत रजिस्टर हो गया। गलत रजिस्टर, हमने फाइन अमाउंट भी जमा कर दिया सर नए सही वाले नंबर पे। लेकिन हार्ड ऑन आइए 2717/24 which is an application for correction in the correction of the modification of order dated 6/11/23 सॉरी 6/11/23। The perusal of the record shows that MCC number 2551/2023 was filed for restoration of WP number 9040/23, but while passing the order of restoration, mistakenly the WP number 9040/2020 has been mentioned in place of WP number 9040/2023. Accordingly, it is directed that the WP number 9040/2020 mentioned in the order dated 6/11/2023 passed in MCC number 2551/2023 shall be read as 9040 shall be read as WP number 9040/2023 with the aforesaid observation IG number 2717/2024 stands disposed of. सर एक आइटम नंबर 67 सर रेस्टोरेशन है और सब निवेदन ये कि सब कोर्ट आवर के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसे डिसाइड करिए ना आप, एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर लगाइए, वो डिसाइड किया जाएगा। सर पूरे बार के साथ गए थे
नहीं रिक्वेस्ट की है सर, माय सबमिशन में भी हमने लिखा हुआ है, पूरे बार के साथ गए थे हम लोग, फिर साहब ने कहा मैं उसी कोर्ट में लगा देता हूँ, वहां जाइए ना। हाँ सर, मच मच बेटर सही फाइल दीजिए सर। 67 देखिए, 67 में देखिए 60 निकाल लो फाइल। लर्नेड काउंसिल फॉर दी petitioner submits that this case be this case may kindly be listed before the court who passed the order on the 22/1/2024 इन CR 379 379/2022 accordingly as spread placed before this court who passed the order। नहीं, उनके पास रोस्टर है इसका? हाँ सर, सिविल का ही रोस्टर है। नहीं, MJC का MCC का है कि नहीं सर? आई डोंट नो सर, MCC का है, पर सर सिविल का रोस्टर है सर। सिविल लॉर्डशिप देखिएगा, लॉर्डशिप का मोशन हियरिंग 73 देकर आना है आपको पता नहीं।